ये चीजें मैं कहना पकड़नी चाहिए। अब दाल जो है आपने बताया कि 800 रुपए किलो क्या रेट है नहीं, इसका? अब दाल का रेट है तकरीबन होलसेल में 265 रुपये। 265 रुपए। और आप अब होटल पे जाएं, आपने बताया कि 1000 रुपए की प्लेट बिक रही है इस टाइम। बिल्कुल और बिल्कुल 265 रुपए ये होलसेल रेट है। वो दाल चना मटन की बता रहा हूँ मैं। मटन की बता रहे हैं हाँ, आप? उसमें वो उसने बनाई होती है मटन। तो वैसे क्या दाल का रेट है नॉर्मल? वैसे तो 200 रुपये की मिल जाती है आम जो अपना अंदरून शहरों में। हाँ, 200 रुपए की जब मिलती है, 200 रुपए के पीछे से किलो आ रही है, तो उसमें क्या बनेगा फिर? नहीं तो आप ये चिकन देख ले कि चिकन 600-550 रेट है, तो होटलों में 2200-2300 रुपये किलो खाते हैं कि नहीं खाते? वो तो हमजा शहबाज की रेट है सारा तो। नहीं, हमजा शहबाज नहीं, अब कई आ गए हैं लोग इस काम में, वो अकेला वो तो नहीं है, कई आ गए हैं बंदे। ज्यादा सप्लाई तो इनकी ही होती है ना? नहीं नहीं नहीं, ये तो ऐसे वो आप और मैं जो मर्जी कह दूं, आप जो मर्जी कह दे, ये नहीं होता। हकीकत जो है ना, वो लोगों ने बहुत बहुत बड़े इसके ना लगा लिए हैं, अपना चिकन के ना बहुत बहुत बड़े ठीक बड़े है। वो अच्छा भट्ट साहब, बात आगे भी कंटिन्यू रखेंगे। बिल्कुल। महंगाई का जमाना है, जो ताजिर है, आप लोग हैं, आप लोग कितना मुतासिर हो रहे हैं इस टाइम महंगाई की वजह से? ठीक है, इसके ऊपर बात करेंगे। और सोने की कीमतों में भी इजाफा हुआ है, 5000 रुपए है, शादियों का सीजन है, ठीक है, तो कैसे लोग जी रहे हैं, इसके ऊपर बात करेंगे। ब्रेक का टाइम है, नाज़रीन शामिल करते हैं ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा।
Hi, I'm Uma Malhotra and I welcome you to my show, Glow and Beyond with Uma Malhotra. Why should I get that facial? Why should I go for a rapid charge facial then an O3 facial? We do the research for you. So we make sure we give you the best. For example, you got fat lash. A client was allergic to fat lash, so I did a London lash patch test on her. She was absolutely fine with London lash. So I used the London lash. Hello and welcome to Business ABC. But the number one reason why businesses fail, whether they are starting or scaling or growing, is because of money. And when you go to them with an idea, they will always go, "Oh, great idea. Oh, vadya." The best businesses either fix something or they make them better. Where it's legal or where it's contract, take your time. वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे महंगाई के हवाले से और इतना जो दौर चल रहा है इस टाइम महंगाई का, ताजिर कितना मुतासिर हुआ है। बट साहब, ये इस दौर में, महंगाई के दौर में ताजिर जो है वो कितना मुतासिर हुआ है? आप लोग कितने मुतासिर हो? बड़ी मार्केटों में आप लोग बैठे हुए हैं, आप लोगों को कितना बोझ पड़ा इसके ऊपर आ गया? हाँ, ये बड़ी अच्छी बात की है जी आपने। ये कोई 5-6 साल से हम ताजिर हम पिस रहे हैं। पहले अगर कोई चीज़ हम लेते थे ना, एक मिसाल है रूह अफ़ज़ा की ले लें, पेटी, वो हम बेचते थे 1200-1300 की। अब उसका रेट हो गया 5,000 रुपये। इतना बड़ा। तो वो जो हमारी कैपेसिटी थी ना, हम जब 50 पेटी ले लेते, अब आ गए 10 पेटी के ऊपर। पैसे नहीं है, क्या करें, कहाँ से लाएं पैसे? प्रॉफिट हमारा वही है। वो 25-30 रुपये लेस करते हैं लोगों को, एक बोतल वाले को, 2 बोतलों वाले को। मुतासर ताजिर इतना मुतासर हो गया है, खासकर रिटेलर हो से, उनकी जो है ना रास वो खाती है, वो खुद ही खा रहे हैं। प्रॉफिट है नहीं। वो जब लेते 2 पेटियां वो लेते थे, अब आ गए दर्जनों पे आ गए, 1 दर्जन 2 दर्जन साबुन वगैरह वो दुकानें लोग छोड़ रहे हैं। सर, ताजिर जब दुकानें छोड़ेंगे तो आप कहते हैं ना कि पंजाबी च कहते हैं कि ना ताजिर रीढ़ दी हड्डी होती है, ठीक है? बिल्कुल सही। तो जब आप लोग पीछे हट जाएंगे तो फिर कैसे ये निज़ाम चलेगा पाकिस्तान का? पाकिस्तान का निज़ाम अल्लाह की मेहरबानी चल ही रहा है। बहरहाल जो ग्रॉस रूट पे छोटा ताजिर है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, वो बहुत मुतासर हो गया, बहुत ही मुतासर। देखना, पहले 1 लाख से दुकान वो बढ़ लेता था अपनी, आज उसका पोजीशन ये है, वो 5-6 लाख भी हो ना, नहीं बढ़ सकता। ये क्योंकि ये 5-6 साल से महंगाई तेज हुई है, ये आज नहीं हुई। ये 5-6 साल से जब 120 से डॉलर गया 180-85 रुपये, अब 285 या 82-83 रेट चल रहा है डॉलर का। महंगाई तभी नीचे आएगी, तभी लोग खुश होंगे जब डॉलर 200 तोड़ेगा बस। यानी कि डॉलर तो अभी भी आसमान के ऊपर है।
क्योंकि उस देखें हमारी बहुत सी चीज़ें बाहर से आती हैं, खाने पीने की, ऑयल आता है, इजनास आती हैं, बहुत सी ये वो चीज़ें हैं जो बेसिक सहूलत है हमारे लोगों की, आम बंदे की। दाल है, चावल है, चावल हमारा पाकिस्तान का है पर वो भी महंगा है। सिर्फ ये है कि ये सब महंगाई का ये जो है ना ये बातें ही हैं। जब डॉलर नीचे टूटेगा ना 200 रुपया तो फिर इंशाअल्लाह ताला तेल भी नीचे आएगा, खुर्दनी तेल, आपकी ये इजनास भी नीचे आएंगी। तो ये तो जब माल ज़्यादा आ जाते हैं या फसल हमारी इधर अच्छी क्रॉप होती है तो फिर रेट कम होते हैं। यही बात है, बड़ी क्रॉप होगी चावल की या दाल की तो काले चने या सफ़ेद चने। बहुत शुक्रिया भट्ट साहब प्रोग्राम में आने के लिए। नाज़रीन, आपने भट्ट साहब की बातें सुनी और एक ही मुतालबा कर रहे हैं वज़ीर आला पंजाब से मरीम नवाज़ से कि महंगाई के ऊपर थोड़ा सा तवज्जो दें, महंगाई को कम करें, जो गरीब आवाम है उनको सहूलत दें। और शहबाज शरीफ साहब से भी मुतालबा कर रहे हैं कि आप भी महंगाई के ऊपर तवज्जो दें, आवाम को सोलहात दें, क्योंकि इलेक्शन से पहले आप लोगों ने कहा था कि आवाम को सोलहात देंगे और अभी तक आवाम जो है वो महंगाई की चक्की में पिस रही है। तो नाज़रीन, ये मुतालबा कर रहे हैं भट्ट साहब। और चीनी के रेट आपको पता है, भट्ट साहब ने दोबारा बता दी है कि चीनी का जो रेट है अब और बढ़ेगा और 70 रुपये तक आगे चीनी बढ़ेगी। तो नाज़रीन, इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। My name is Terence South. I formerly served in the British Army. We had to go down as the muscle squad and go on, you come with us. She said, not let us go, we're fighting. No. I could communicate, I had all the skills for the wirelesses, the radios. I could do that, that was no problem. I could do that blindfolded. Second World War, understood where you were and what you were doing, where your head was. अगर आप कमाते हैं तो अपनी ज़ात पे अगर खर्च ना करें तो फिर कहाँ किया? इस मामले में मैं अपनी फैमिली में, अपने ख़ानदान में बड़ा फजूल खर्च मशहूर हूँ। देखिए 91 में हमने ये मैगजीन स्टार्ट किया था और ये दुनिया का टॉप, पाकिस्तान के टॉप जर्नल्स में था, जो रिसर्च ओरिएंटेड इलस्ट्रेटेड जर्नल था। हम कम से कम अब जो है 77 साल बाद हम एक कौम इकट्ठे हो जाए। हमारे दौर के अंदर 34 अरब डॉलर रेमिटेंस जो था ओवरसीज पाकिस्तानी भेज रहे थे। कायदे रहमतुल्लाह अलैह फरमा गए हैं कि काम का टाइम बढ़ाएं, काम करें। आप यकीन करें कि नॉर्दर्न एरिया के पैकेजेस इतने ज़्यादा है, अभी पाकिस्तानियों ने नॉर्दर्न एरिया को भी नहीं अभी इतना एक्सप्लोर किया। मुल्क के दूसरे शहरों की तरह ननकाना साहब में भी जो गर्मी का ज़ोर जारी है, पारा जो है 40 से 44 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच चुका है और महकमा मौसमियात की जानब से आइंदा जो चंद रोज़ है उसमें भी गर्मी की शिद्दत बढ़ने का इम्कान है। गर्मी की शिद्दत बढ़ने के साथ साथ जो हीट वेव है इसमें भी काफ़ी इजाफा हो गया है। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक इस गर्मी की शिद्दत से बचने के लिए लोग घरों से कम निकलें, अगर निकलना मजबूरी हो तो सर ढाँप कर निकलें।
12 बजे से लेकर 4 बजे के दरमियान बच्चे और बुजुर्ग भी घरों से कम निकलें। दूसरी जानब महकमा तलीम की जानब से 28 मई से सरकारी स्कूलों में तातीलात का ऐलान भी कर दिया गया है, जबकि रेस्क्यू 11, 22 और महकमा सेहत के अमले को भी हाई अलर्ट रहने के अहकाम जारी कर दिए गए हैं। ट्रस्ट है लोगों का। मुझे लगता है आप लोगों तक रसाई नहीं आपकी हो पाती। आपका मंशूर क्या है? किसी सियासी जमात में इतना अच्छा इंतखाबी कमीशन नहीं है। अच्छे कंटेंट देखना चाहें तो फिर डेफिनेटली आहिस्ता सा चेंज तो आएगा ना, ग्रेजुअल। तमाम 12 ज़ोडिक साइन के ऊपर मुझे अबूर है। दुबई के पास वसाइल थे, आज पाकिस्तान के पास तो बहुत कुछ है। जो सेफ सिटी के हवाले से है वो अब तो काफी ज्यादा जो है दोबारा वर्किंग में आ गए हैं। हाँ, एक टाइम आया था जब काफी कम हो गए थे। 50 तो स्टार नहीं हो सकते, स्टार तो 3-4 ही होंगे किसी भी फील्ड के। बच्चे को देखा कि वो एक ऐप के अंदर घुसा हुआ है जिसको टिकटॉक कहते हैं। It's me, Jia. This is my street vibes. But I got you, baby. Baby, I don't need dollar bills to have fun tonight. Hello, I'm Alan Curry. I'm bringing you a show badge of honour on my successful life in the police service to the rank of Chief Superintendent. Talking about me, and hopefully I'm saying some nice things about myself. There's a couple of bad ones, I'm sure, as well. And I don't like criminal activity. As opposed to the other way around, when you arrest somebody and have to find the evidence. And the feeling of doing something for somebody else, I don't know how you can get that from anybody else. Hello, Dr. Anand here to tell you about unleashing your inner power. When you talk on Facebook with someone with your family far away, genuine communication takes place. Just look after yourself and grow in power and grow in finance and grow in status. If you stay in your comfort zone, you'll never find out who you are.
वक्त फूलनगर शहर की सब्ज़ मंडी में खड़ा हूँ और इस वक्त गर्मी के फलों में बहुत ज़्यादा फल हैं, लेकिन तरबूज एक ऐसा फल है कि जो अपने जायके और खुशबूदार और मिठास की वजह से सबसे ज़्यादा मशहूर है। वैसे तो इस वक्त सेब, आड़ू, अमरूद, खुरमानी, लुगाट भी हैं, लेकिन वो महंगे फल हैं जो कि गरीब आवाम की क़ुव्वत ख़रीद से बहुत ज़्यादा हैं। गरीब आवाम उन फलों को नहीं ख़रीद सकी, लेकिन तरबूज एक ऐसा फल है कि जो कम कीमत में 40 रुपये किलो के हिसाब से आवाम इसे ख़रीद रहे हैं और बड़े ज़ौक़ व शौक़ से इसे खाते हैं और लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। तरबूज फल बहुत अच्छा है, मौसम के लिहाज से जायका भी अच्छा होता है, मीठा भी अच्छा है और ये बाकी फलों की निस्बत जायके में अच्छा है और ये हमेशा जो है ना मौसम के लिहाज से इसको खाना चाहिए, बेहतरीन फल है। और हम ये गाड़ियों के हिसाब से आते हैं, हर रोज़ 1 गाड़ी 2 गाड़ी सेल करते हैं जिसमें 80 मन 50 मन ऐसे वज़न होता है। तो ये तरबूज आपसे लोग शौक़ से ख़रीदते हैं? माशाल्लाह शौक़ से ख़रीदते हैं। ये देखिए आपने कि इस गर्मी के मौसम में लोग सेहत अफ़ज़ा और खुश जायका तरबूज बड़े शौक़ से ख़रीद रहे हैं और खा रहे हैं। मेरा भी आवाम को ये मशवरा है कि इस गर्मी के मौसम में सबसे सस्ता फल तरबूज है, ये इस्तेमाल करें और सेहतमंद रखें। कैमरा टीम गफ़ार अहमद के हमरा डॉक्टर लियाकत अली, साउथ एशिया ग्लोबल न्यूज़, फूलनगर। Hello, I'm Robin Ashby. I'm a city councillor, I'm an advisor. I have done a lot of things in my life. Mix some hot Chileans, cool Jamaicans, Dominicans, Trinidadians and Bajans with some Ethiopians, Chinese, Vietnamese and Sudanese. There were 282,000 people who came here to study. We can absolutely understand that first generation come here and they're in a strange land where they have to learn new customs and it's cold as well.
Hi, I'm Uma Malhotra and I welcome you to my show, Glow and Beyond with Uma Malhotra. Why should I get that facial? Why should I go for a Repicharge facial, then an O3 facial? We do the research for you. So we make sure we give you the best. For example, you got fat lash. A client was allergic to fat lash, so I did a London Lash patch test on her. She was absolutely fine with London Lash. So I used the London Lash. Hello and welcome to Business ABC. But the number one reason why businesses fail, whether they are starting or scaling or growing, is because of money. And when you go to them with an idea, they will always go, "Oh, great idea. Oh, vadya." The best businesses either fix something or they make them better. Where it's legal and where it's contract, take your time. My name is Terence South. I formerly served in the British Army. We had to go down as the muscle squad and come on, you come with us. She said, "No, let us go, we're fighting." No. I could communicate, I had all the skills for the wirelesses, the radios. I could do that, that was no problem. I could do that blindfolded. Second World War, understood where you were and what you were doing, where your head was. मई की धूप में जब हर तरफ गर्मी का राज होता है, ऐसे में कुदरत का ये जर्द तोहफा अमलतास न सिर्फ साया फराहम करता है बल्कि माहौल में रंगों की बहार भी ले आता है। अमलतास, जिसे सोने की झाड़ी भी कहा जाता है, न सिर्फ एक खूबसूरत दरख्त है बल्कि इसका तिबी इस्तेमाल भी अहमियत रखता है। इसके फल, जिसे मुकामी तौर पर सना कहा जाता है, कई यूनानी नुस्खों में बतौर दवा इस्तेमाल होते हैं। शहरियों का बात करते हुए कहना था कि जर्द रंग के फूल बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। हम रोजाना कॉलेज जाते हैं तो इन्हें देखते हैं तो दिल बाग बाग हो जाता है। हुकूमत को चाहिए कि ऐसे दरख्त ज़्यादा से ज़्यादा लगाए। ये जर्द रंग के फूल बहुत खूबसूरत हैं और सुबह के टाइम जब हम आते हैं तो कॉलेज में बहुत खूबसूरत लगते हैं और दोपहर के टाइम भी छाँव का इंतज़ाम करते हैं हमारे लिए। और मसला ये है कि ये बहुत कम है तादाद में, हमें चाहिए और हुकूमत को चाहिए कि इसको और ज़्यादा बढ़ाएँ और इनकी तादाद में इजाफा करें और शहर के मुख्तलिफ इलाकों में ऐसे पौधे लगाएं।
शहरियों का कहना है कि ये दरख्त सिर्फ जीनत नहीं बल्कि माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ का जरिया भी है। ये गर्दो गुबार को जज़ब करते हैं और ऑक्सीजन फराहम करते हैं और शदीद गर्मी के मौसम में ठंडी छांव बांटते हैं। जब सूरज तप रहा हो और हवा भी थम जाए, ऐसे में अमलतास के जर्द फूल कसूर वालों के दिलों पर ठंडक का फाहा रखते हैं। अगर आप कमाते हैं तो अपनी ज़ात पे अगर खर्च ना करें तो फिर कहाँ किया? इस मामले में मैं अपनी फैमिली में, अपने ख़ानदान में बड़ा फजूल खर्च मशहूर हूँ। देखिए 91 में हमने ये मैगजीन स्टार्ट किया था और ये दुनिया का टॉप, पाकिस्तान के टॉप जर्नल्स में था, जो रिसर्च ओरिएंटेड इलस्ट्रेटेड जर्नल था। हम कम से कम अब जो है 77 साल बाद हम एक कौम इकट्ठे हो जाए। हमारे दौर के अंदर 34 अरब डॉलर रेमिटेंस जो था ओवरसीज पाकिस्तानी भेज रहे थे। कायदे रहमतुल्लाह फरमा गए हैं कि काम का टाइम बढ़ाएं, काम करें। आप यकीन करें कि नॉर्दर्न एरिया के पैकेजेस इतने ज़्यादा है, अभी पाकिस्तानियों ने नॉर्दर्न एरिया को भी नहीं अभी इतना एक्सप्लोर किया। ट्रस्ट है लोगों का, मुझे लगता है आप लोगों तक रसाई नहीं आपकी हो पाती। आपका मंशूर क्या है? किसी सियासी जमात में इतना अच्छा इंतखाबी कमीशन नहीं है। अच्छे कंटेंट देखना चाहें तो फिर डेफिनेटली आहिस्ता सा चेंज तो आएगा ना, ग्रेजुअल। तमाम 12 ज़ोडिक साइन के ऊपर मुझे अबूर है। दुबई के पास वसाइल थे, आज पाकिस्तान के पास तो बहुत कुछ है। जो सेफ सिटी के हवाले से है वो अब तो काफी ज्यादा जो है दोबारा वर्किंग में आ गए हैं। हाँ, एक टाइम आया था जब काफी कम हो गए थे। 50 तो स्टार नहीं हो सकते, स्टार तो 3-4 ही होंगे किसी भी फील्ड के। बच्चे को देखा कि वो एक ऐप के अंदर घुसा हुआ है जिसको टिकटॉक कहते हैं। Hello, Dr. Anand here to tell you about unleashing your inner power with Dr. Anand. Today, I'll tell you a little bit about my story as someone from South Asia who is an immigrant. Well, I'm not the first immigrant. People have been coming to this country from ages. There were Celtics, there were Anglos, there were Saxons. That's why this country is called Anglo-Saxon. Then there was wars, so people came in when they were needed after Second World War. Then there was issues about that. And now this country is bringing in people who are talented, such as doctors or engineers or chefs, specialists. I myself have brought in 3 people time and again to teach music in this area, because that is what's special about our subcontinent. The arts and the culture is ancient. On all the 3-4 countries, we really value our culture. But I am here also to tell you about how to fit in with this country and make a success of it. It's about you. When you come here, how do you make it possible for you, your wife, your children to be happy and successful, to break out of their shells, to merge and interact with the local community, because ultimately it's about communication. So there are many barriers that are with us when we come here. We wear different clothes,
The cold is here. You have to drive on the left side of the road. There are lots of rules and regulations. Because in the subcontinent, many things we allow. Here things are much more controlled and disciplined. So we will talk about those things as well. But generally life is good. Otherwise, why would I be, after retiring, still sitting in this country? I could easily go back to the subcontinent and had a very wonderful life with lots of food, lots of servants, lots of this, lots of that. But I'm here. I enjoy here. I've chosen to be here. So this part is about immigration. When people come into this country or any other country, it could be anywhere else. You could be working in Finland, you can be working in China, you can be working from North India to South India, you can be working from Sindh to Lahore, you can be working from Dhaka to Sylhet. It doesn't matter. Once you move even a few miles, you uproot yourself. So immigration has a lot of challenges and a lot of things have to be learned about the new places, culture, language, clothes, rules and regulation, what is okay, what is not okay. In many cultures, some things are perfectly fine, some way of addressing people is fine, and some ways are not. For instance, if you're in Mumbai and you say, "Ch-ch," the waiter comes, no problem. Don't try it anywhere else because people get offended. They say, "Am I your servant?" People get very offended. Neither is right, neither is wrong. It's about what is the prevalent culture. You're not come here to change England. You come and see what it is like. And if you want to be happy here, you in particular, then you have to learn a few tricks of the trade. And that's what the first part is about, is to tell you how to be happy in a new environment. To me, it's a little bit like a bride in a patriarchal society going to her in-law's place. At first, she's very shy. She listens to her mother-in-law, she listens to her father-in-law. And bit by bit, as she is liked and loved, then the mother-in-law will ask, how do you make parathes in your house? How do you make tea in your place? What's special? But don't go and impose, because you have come because you wanted to come. This country wasn't begging for you and you came by choice. You worked very hard to get here. So if you have a little humility in the beginning and reach out, and people will then obviously like you. I, having been in this country 45 years, speak my mind openly, and nobody minds because they know me for 2 generations. Having been a doctor, a lot of people know me, and now I'm in the public life as a politician, and that's even more exposure. But things don't upset me. Even if somebody is rude to me, I just smile, say, thank you very much, and walk on, because that's what English politicians do. You don't take an affront, you don't take an umbrage, you don't get angry. So the first thing about being an immigrant is you chose to come and be happy here. And if it's not good here, find a place where you're happy, find a job you're happy, etc., etc., etc. So today the issue is about immigration to a new country. It's me, Gia. This is my Street Vibes. But I got you, baby. Baby, I don't need dollar bills to have fun tonight. Hello, I'm Alan Curry. I'm bringing you a show badge of honour on my successful life in the police service to the rank of Chief Superintendent. Talking about me, and hopefully I'm saying some nice things about myself. There's a couple of bad ones, I'm sure, as well.
and I don't like criminal activity. As opposed to the other way around when you arrest somebody and have to find the evidence. And the feeling of doing something for somebody else, I don't know how you can get that from anybody else. Hello, I'm Robin Ashby. I'm a city councillor, I'm an advisor. I have done a lot of things in my life. Mixed some hot Chileans, cool Jamaicans, Dominicans, Trinidadians and Bajans, with some Ethiopians, Chinese, Vietnamese and Sudanese. There were 282,000 people who came here to study. We can absolutely understand that first generation come here and they're in a strange land where they have to learn new customs and it's cold as well. Let me tell you my own story first. My cousin Ashit Sinha, late Ashit Sinha, he came to my hometown, to my mother country and said, Jaldi kijiye, England chaliye, which means be quick, come to England. I said, I will, but I've just finished medicine. I've just got married and my wife is pregnant as well. What do you want me there for? He says, the party is coming who hates foreigners. Then I said, why should I come? He said, because you can come in before that party comes. And how interesting it is that I am a very strong activist, the only strong activist in the Northeast for that party. So things change, things improve. And why it has improved is obviously because of language and because I'm accepted by the community. So I want you to also come here and be loved and liked. Most of us come here for cash, money. So when I was asked at my interview, why did you come here? I said to have a better standard of living, which is like saying money. I wanted my children to have better education.
without going to a private school in India? Money. So most of it is to do with economic migration. I did not run away from my mother country. I came here positively. Some people unfortunately have to come because things are hard where they are. But most of us, 99%, 95%, come because life is better here. And because this country ruled our part of the world, there's a connection. There often happens that connection. Who's the master, who's the slave is forgotten very soon. You learn speak English because the English people were there. I mean, I couldn't go to France and start. I couldn't go to Portugal. So England was the natural place. I happened to have a medical degree and I came. And very soon I realized that this country runs on rules. People just drive on the left side of the road. If it's 2 o'clock in the morning and there's no traffic, and if the red light comes on, you stop. Initially, I used to fall foul of it. I used to think, well, it's 2 in the morning, nothing's coming. There's no beams coming across, let's go across. But then I got caught and I got fines, speeding fines. And very soon I learned that if you stay within the rules, life is very easy. A lesson for you, stay within the rules. A lot of our people, or quite few I know, just do a little bit of fraud, a little bit. Now, systems are there to catch you. The English people are quite gentle. The first time they let you go. They know what's going on. They let you do it, and they'll let you do it. But one day, the trap will shut, and you'll be either in jail or living abroad, or your names at least will be in the headlines. And that's not good, is it? I mean, from the minority community, if you're coming from the subcontinent, from our own South Asia, it's very bad when the paper prints so-and-so, and you feel part of it. Doesn't matter how long I live here, I still feel part of that community. So if somebody's bad name comes, I feel bad because each of us is an ambassador to this country. So remember, when you come from the subcontinent, when you come from South Asia, you are a representative. A lot of us also live in little ghettos, little groups. So you're from that part of the world, the next door is from that part of the world, next door is from that part of the world. Then all you're doing is coming to a cold country and making money. But there's joys here as well. So I'm not just saying don't just stick with yourselves. It is called an echo chamber. What you need is somewhere where there are good people. I have found the local population very, very good because I mix with them, they mix with me, and there is no issue. And remember, it's for your benefit. If you go anywhere, and even in, say, a large country like India or Pakistan or Bangladesh, if you move, you still will have to adjust. Don't go looking just for your own people, within quotation marks. Why do you think we people from South Asia are in the paper more than we should be? Because we do naughty things, we do wrong things, we have a habit of doing them. We have a habit of doing just a little bit of extra. So many of my patients have been in jail. Good people, accountants, businessmen, taxi owners have been in jail because in this country, once they let you cheat, second time they let you cheat, third time you're arrested, and there is no escape. You can't tell lies, you can't bribe, you will go to jail. Remember that. I'm saying this for your good. It sounds a bit pathetic, it sounds very cruel, but I love you, that's why I'm telling you, do not try to cheat because you will get caught. Whether it's insurance fraud, whether it's tax fraud, whether it's VAT fraud, our people do it more. I know that. It's a dishonorable thing to admit to, but so it is. So please do not come to this country and try to be clever. Be clever, but I don't mean clever in a bad way, in a negative way, because you will. And I'm saying this for your own benefit. Land up in jail, your wife and kids will cry, nobody will want to talk to you, and you might want to just run away. But imagine going back to South Asia and they'll all laugh at you. Ah, we saw you in the paper. Remember, everything is exposed now. Everything is on the internet. So do not cheat. That is basically the rule for finance. Do not do wrong things because everything is electronic. Do not break any rules as much as possible. Sometimes we make mistakes and the police are very forgiving. The other day I was in Gateshead and I took a turn and unfortunately the road wasn't very clear to me and I had on-facing traffic. It was night, so there wasn't much traffic. I reversed and went in. I saw a police lady come behind me. I stopped. I took out the keys and handed it over to her and just said, I'm sorry. I admitted to my guilt
And she was so nice. She said, "Are you new here?" I said, "I'm not new, but I don't know this part of the world, though I live in Newcastle." And she said, "Fine, go." She had looked at my address and checked. So people are kind here. They are not against us. It's we, South Asians, who are against ourselves. We are bitter towards our own self. We are unkind to ourselves. We are unkind to our families by cheating and getting a name in the paper, and everyone is laughing at us. As I was saying, you make a lot of effort, pay a lot of money, detach yourself from your family, your wife and children, etc. to come here, make new friends and everything. One false move and you'll get deported. And once that is, you'll be hated all over the world. So please, please, please stay within the rules. Thank you. Hi, I'm Uma Malhotra and I welcome you to my show, Glow and Beyond with Uma Malhotra. Why should I get that facial? Why should I go for a rapid charge facial then an O3 facial? We do the research for you. So we make sure we give you the best. For example, you got fat lash. A client was allergic to fat lash, so I did a London lash patch test on her. She was absolutely fine with London lash. So I used the London lash. Hello and welcome to Business ABC. But the number one reason why businesses fail, whether they are starting or scaling or growing, is because of money. And when you go to them with an idea, they will always go, "Oh, great idea. Oh, vadya." The best businesses either fix something or they make them better. Where it's legal or where it's contract, take your time. सूरज के बदलते हुए तेवर के साथ मुल्क भर की तरह हवेली लखा और गिरदो नवा में भी गर्मी की शिद्दत में बेपनाह इजाफा हो गया। गर्मी की शिद्दत की वजह से शहरियों ने हवेली लखा रोड अड्डा हेड सुलेमान की, जिसे मुल्तान दिल्ली रोड भी कहा जाता है, सड़क किनारे लगे घने दरख्तों की छाँव के नीचे कैम मशरूबात पॉइंट का रुख कर लिया, जहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म की मशरूबात के पॉइंट कैम हैं। यहाँ पर गन्ने का रस, सिकंजबी, सरदियाई, सत्तू और इमली के शरबत समेत मुतद्दद मशरूबात के ठेले लगे हुए हैं। गर्मी की शिद्दत को कम करने के लिए यहाँ मशरूब पीने लोग जौक दर जौक आते हैं और ठंडे मशरूबात पीकर राहत महसूस करते हैं। हैड सुलेमान की इलाका की सरदियाई बहुत मशहूर है, जिसमें बादाम, खशखाश, सौंफ, ज़ीरा, छोटी इलायची, चार मगज़ और दीगर अशिया मिलाकर तैयार की जाती है, जो पीने वालों के लिए खुश ज़ैक़ा होने के साथ गर्मी की शिद्दत कम करके दिल को सुकून, ठंडक और राहत बख्शती है। रिपोर्ट शाद सईद वट्टू, नुमाइंदा साउथ एशिया, ग्लोबल टीवी, हैड सुलेमान की हवेली लखा।
My name is Terence South. I formerly served in the British Army. We had to go down as the muscle squad and go on, you come with us. She said, "No, let us go, we're fighting." No. I could communicate, I had all the skills for the wirelesses, the radios. I could do that, that was no problem. I could do that blindfold. Second World War, understood where you were and what you were doing, where your head was. अगर आप कमाते हैं तो अपनी ज़ात पे अगर खर्च ना करें तो फिर कहाँ किया? इस मामले में मैं अपनी फैमिली में, अपने ख़ानदान में बड़ा फजूल खर्च मशहूर हूँ। देखिए 91 में हमने ये मैगजीन स्टार्ट किया था और ये दुनिया का टॉप, पाकिस्तान के टॉप जर्नल्स में था, जो रिसर्च ओरिएंटेड इलस्ट्रेटेड जर्नल था। हम कम से कम अब जो है 77 साल बाद हम एक कौम इकट्ठे हो जाए। हमारे दौर के अंदर 34 अरब डॉलर रेमिटेंस जो था ओवरसीज पाकिस्तानी भेज रहे थे। कायदे रहमतुल्लाह फरमा गए हैं कि काम का टाइम बढ़ाएं, काम करें। आप यकीन करें कि नॉर्दर्न एरिया के पैकेजेस इतने ज़्यादा है, अभी पाकिस्तानियों ने नॉर्दर्न एरिया को भी नहीं अभी इतना एक्सप्लोर किया। Now let me tell you two examples of two of my patients. One was an accountant from the subcontinent and he got into the habit of gambling. And one day he got money from a patient, another patient of mine, who gave him the money to pay the tax people. He did not, he went and gambled it away. He did not ring the lady and said, "I'm very sorry, I've gambled it away, but I'll make up to you in a month's time." He just didn't file it. When the case came up, he was arrested by the police for evading arrest and he was in jail and his name was all over the paper. I felt embarrassed. A different example, a waiter in a restaurant said to me about 12 years ago, he said, "I work in a restaurant and I get £9,000 a year over the table, white money, and I get £5,000 all over the year as black money in my hand, and I'm looking for a mortgage." I said, "But I'm not a doctor, I'm a doctor, I'm not a mortgage advisor. But you cannot get mortgage on black money. You can only spend that on little things. And it's wrong anyway." So all I'm saying is, if you want to maintain your blue passport, it's a blue passport, British now, not red anymore. If you want to maintain that, do not cheat. Do not take shortcuts. Do not take advice from other people from your part of the world because they've done bad things and succeeded. Many times they do shortcuts, what it is called in Hindi, jugaad, like last minute touches. Maybe I'll talk about jugaad as well on another time, but we are so used to working in the chaos of our subcontinent, which was recently freed, and therefore we are very confused that the systems have not laid down, where democracy is still not running very smoothly. But here it is. We have had 400 years of democracy in Britain. This is where democracy started. So rules run here, and if you stick with the rules, you'll be fine. And if you're in trouble, go and ask a solicitor, go and ask your next door neighbor, go and ask a friend who's not necessarily just like you, trying to find another way out of your trouble. Do it the right way. If there's a fine to pay, pay the fine. If there's an insurance claim, it should be genuine. Don't try to cheat, you'll get caught. So many people I know
have had fires in their warehouse. It is wrong. Everyone knows. But you know, the English people are quite polite. They know what it is. They just keep quiet for once. Second time they keep quiet. Third time, that's it. You're either in jail, completely ruining your reputation and my reputation as well. So if you wish to come to the Western countries, I'm not just talking about England, it can be Sweden, it can be Finland, there are lots of our people in these countries, Portugal, do not commit crimes. There is no need for it. You will spoil your reputation, your families, your friends, people from the subcontinent, and generally you create unhappiness. Avoid the police, avoid lawyers, just stay on the clean, narrow path of true, good citizen as an immigrant. So, in my coming episodes, I will definitely prove to you that you don't need professional help to get a visa. You don't need that. The rules are there, the system is there, and if you're the right person, living the right way, improving all the time. And I keep saying all the time, improve yourself, improve your language, improve your social skills, improve the work you do. Don't just be stuck in one job and just do, and then go and do naughty things to compensate for the misery of it. If you stick with the law, you'll do it. I'll quote some more examples of people, how they cheat, how they do wrong things and get into trouble. Only the other day, I was talking to a fellow and he says, "Doctor, tell me a way of doing this." I said, "Why are you asking me to do things? I just came as a professional. I stayed within the professional boundary. I could not step out of it. I couldn't be selling drugs on the side. I could be, but why would I just damage my whole reputation? My wife would be ashamed of me. My children would be shocked. And whole community would say, what's happened to this man? He talks about it a lot. Look what he's got himself into." Because when you're new and a different color, a different language, a different way of talking, people will notice you because you stick out like a sore thumb. So you are an ambassador of your country. Whichever part of the South Asian subcontinent you come from, you are an ambassador. Remember, you represent every single person of that faith or that part or of that culture. You are not a single entity. You cannot be lost among all the other local population because you are different. So take full advantage. People are very kind in this country. I realize people go the extra mile. I mean, in this country, there are people who don't learn English and this country gives them translated paper, translated this, translated that. That is the country being gentle, but you are being stupid. You should be going to a night class and learning English. All right, if you're 80 years old and a grandmother and stay at home, that's fine. But if you are seeking a job, and if you're looking for a job, or if you're on the dole for wrong reasons, and let me tell you, a lot of our people, as a doctor, I'll tell you, make fake promises, and their fake doctor lets them have a certificate. But one day they'll be caught. In China, if an acupuncturist gives you a sick note, it lasts longer than a Western doctor. It's a bit like that. So the doctor's reputation is also going down by false certification. So I strongly urge to you, stick within the rules, do the good thing, do night classes, read, look in YouTube. Don't just look at entertainment, look at edutainment. Look at improving your language, improving your knowledge. Don't just watch some Hindi movie and I'm very, very happy, thank you very much. No, read, learn. There's so much to learn. There's so much ease to learn. You can do night classes, you can do courses online, you can join Open University. There is so much. There are camera clubs, there are artistic clubs. These are the ways of getting into this society. But if you don't want to be integrated, why the hell are you here? And that is the point I'm making. Be happy, be positive, be productive, and this society will love you. I'm a living example of that. I came just as a doctor in the hospital, then I became a general practitioner. Now I'm a politician. I've been on radio. I'm now on you on this wonderful satellite channel, South Asia Global.
आप लोगों ने पहले भी आवाज़ उठाई इस्लामाबाद में गैर, बिजली के ख़िलाफ़, महंगाई के ख़िलाफ़, तो आप लोगों की आवाज़ सुनी नहीं गई। देखिए, जमात इस्लामी ने महंगाई के ख़िलाफ़ और ख़ास तौर पर बिजली के बिलों में होश रुपा इजाफे के ख़िलाफ़ हमने आवाज़ बुलंद की थी। 300 यूनिट तक का उन्होंने कहा था कि हम सोलर सिस्टम देंगे। हाँ जी। कराची में, सिंध में देना शुरू किया हुआ, वहाँ वो हमारी हुकूमत है, पूरे पाकिस्तान में हमारी हुकूमत नहीं है। टैक्स देना हर शख्स की जिम्मेदारी है, हर ताजिर की जिम्मेदारी है। ट्रस्ट है लोगों का। मुझे लगता है आप लोगों तक रसाई नहीं आपकी हो पाती। आपका मंशूर क्या है? किसी सियासी जमात में इतना अच्छा इंतखाबी कमीशन नहीं है। अच्छे कंटेंट देखना चाहें तो फिर डेफिनेटली आहिस्ता सा चेंज तो आएगा ना, ग्रेजुअल। तमाम 12 ज़ोडिक साइन के ऊपर मुझे अबूर है। दुबई के पास वसाइल थे, आज पाकिस्तान के पास तो बहुत कुछ है। जो सेफ सिटी के हवाले से है वो अब तो काफ़ी ज़्यादा जो है दोबारा वर्किंग में आ गए हैं। हाँ, एक टाइम आया था जब काफ़ी कम हो गए थे। 50 तो स्टार नहीं हो सकते, स्टार तो 3-4 ही होंगे किसी भी फील्ड के। बच्चे को देखा कि वो एक ऐप के अंदर घुसा हुआ है जिसको टिकटॉक कहते हैं। It's me, Jia. This is my Street Vibes. But I got you, baby. Baby, I don't need dollar bills to have fun tonight. Hello, I'm Alan Curry. I'm bringing you a show badge of honour on my successful life in the police service to the rank of Chief Superintendent. Talking about me, and hopefully I'm saying some nice things about myself. There's a couple of bad ones, I'm sure, as well. And I don't like criminal activity, as opposed to the other way around when you arrest somebody and have to find the evidence. And the feeling of doing something for somebody else, I don't know how you can get that from anybody else.
मुल्क के दूसरे शहरों की तरह ननकाना साहब में भी जो गर्मी का ज़ोर जारी है, पारा जो है 40 से 44 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच चुका है और महकमा मौसमियात की जानब से आइंदा जो चंद रोज़ है उसमें भी गर्मी की शिद्दत बढ़ने का इम्कान है। गर्मी की शिद्दत बढ़ने के साथ साथ जो हीट वेव है इसमें भी काफ़ी इजाफा हो गया है। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक इस गर्मी की शिद्दत से बचने के लिए लोग घरों से कम निकलें, अगर निकलना मजबूरी हो तो सर ढाँप कर निकलें। 12 बजे से लेकर 4 बजे के दरमियान बच्चे और बुजुर्ग भी घरों से कम निकलें। दूसरी जानब महकमा तलीम की जानब से 28 मई से सरकारी स्कूलों में तातीलात का ऐलान भी कर दिया गया है, जबकि रेस्क्यू 11, 22 और महकमा सेहत के अमले को भी हाई अलर्ट रहने के अहकाम जारी कर दिए गए हैं। Hello, I'm Robin Ashby. I'm a city councillor, I'm an advisor. I have done a lot of things in my life. Mix some hot Chileans, cool Jamaicans, Dominicans, Trinidadians and Bajans, with some Ethiopians, Chinese, Vietnamese and Sudanese. There were 282,000 people who came here to study. We can absolutely understand that first generation come here and they're in a strange land where they have to learn new customs and it's cold as well.
Hello and welcome to Business ABC. But the number one reason why businesses fail, whether they are starting or scaling or growing, is because of money. And when you go to them with an idea, they will always go, oh, great idea, बहुत बढ़िया. The best businesses either fix something or they make them better. Where it's legal or where it's contract, take your time. My name is Terence South. I formerly served in the British Army. We had to go down as the muscle squad and go on, you come with us. She not let us go, we're fighting. No. I could communicate, I had all the skills for the wirelesses, the radios. I could do that was no problem. I could do that blindfolded. Second World War, understood where you were and what you were doing, where your head was. When I saw my father treating patients and the satisfaction that he used to get in treating patients who were disabled and suddenly making them walk, that gave me an inspiration as well. And that's where my mindset right from childhood was that I want to help people, I want to do something for the country. And that's where I became a doctor and then became an orthopedics and a trauma surgeon. And then wanted to learn more and see what the best things were happening in different centers in the world. So that's where I went out to do my AO fellowship from Canada and then fellowship in knee surgery from the United States of America, and where I got an opportunity to work with the guru of knee surgery in the world. And that was something, a patient, when somebody would come in and basically who could barely walk, making them walk again. A trauma patient coming in who was disabled and making them walk again was a great satisfaction. When I saw these patients lying on the road, and 95% chances were that nobody's going to help them. So that was an inspiration that I got from the med school when I was there, and we had done the first study that in case of an emergency, there were 95% chances you not get an ambulance. We kept working as a social work to do something about it. And we went and tried to revamp the existing organizations, revitalize them. But then when it all didn't work out, so it came to a stage where they said, either you do something about it, which meant that I had to leave my career, a good practice, my own family hospital, and which was actually a very, very difficult decision. My family thought I was crazy, I was mad, that I was thinking of leaving my practice. Where am I going to earn from? The biggest challenge that we faced when we were making rescue was changing minds. The mindset was, it just can't be done in Pakistan. A developing country, a rescue service, and one number, and people will immediately get help. So it was like as if I was talking some very strange words, and this was impossible in a developing country. The biggest challenge was we didn't have trained human resource. For the first time, we started the training of emergency medical technicians. Then the ambulances. If we imported them, we couldn't maintain them, the repair and maintenance would have been necessary. So we had to start the fabrication of ambulances within Pakistan so that it was easy for repair and maintenance. Then we started it in October, so in 2004.
And everybody was, it will not work out. We started with only 14 ambulances in the city of Lahore. A change of government is always a challenge. Whatever initiatives have been taken by the previous government, the new government looks at it from an apprehension and they want to start their own project. Initially, we did face a lot of resistance, and obviously we had to clarify all of those things. So the challenge and rescue go together. And when these people, even from the new government, who went there and said, my mother has been saved because of this, you can stop everything else done by the previous government, but not this service. So I think that became our biggest help, and our performance spoke for itself. Starting from the city of Lahore in 2004, and today, after 16 years, when I see what we've been able to achieve, even it's difficult for me to believe that. Where we started from 14 ambulances and then expanded to all the 36 districts of Punjab province with 110 million population, our fleet went up to 350 ambulances. And we kept it very cost effective, developing a response time based model rather than a population based model. So with minimal resources, we were able to extensively cover the area. When we saw the challenge of the increasing traffic, the congested areas, the walled city or the old city areas where it was very difficult for the ambulance to respond, we went into a motorbike ambulance service. And today, the motorbike ambulance service has transformed everything, and we've been able to respond to over 600,000 calls up till now with an average response time of 4 minutes, which I think is comparable even internationally. And everybody, even when we were starting the motorbike ambulance service, was a lot of apprehension. This will not be successful, this is going to be a waste, and nobody could really believe that they could do it. And today, they are able to reach the most difficult areas, the most difficult, narrow streets, even in traffic congestion, they're able to respond to emergencies, and they immediately go, they're all trained staff. In 2005, we had an earthquake in Pakistan, and we saw the helplessness of the people. And immediately, 1 year after that, we established our own disaster emergency response team. And then the team, we started building our teams and the capacity of that team. And we finally applied for UN certification in 2015 after we had met the basic requirements. And today, we are the first team, the search and rescue team, which got the UN certification from INSARAG in South Asia. Then we established a model fire service, a modern fire service from Lahore in 2007, and then this service has gradually expanded to all districts of Punjab. And today this fire service has responded to over 151,000 fire incidents and saved losses worth over 450 billion rupees. So I think that's just by improving the response and professional firefighting. Then came the floods 2010, which was a major event. And so it's like, so that was, we saw the helplessness over there. So we collected all the boats available with different organizations, so organized the service. And today we manage all the floods in the city, every year which come in the province. And today we've rescued over 200,000 victims, from different flood-prone areas or inundated areas. So this was a big change. After the successful launch of an emergency rescue service in Pakistan, I still always wanted to go back and help the people of this country. So my old patients and everybody else motivated me that I needed to give more time to this clinical practice. So I had to sacrifice my evenings for this. So I had to sacrifice my private life, and I dedicate 3 evenings at least in a week to come and help these poor and needy patients. Clinical practice is very important. It keeps you humane, because once you're involved in the entire day in the administrative affairs, managing such a large service, then coming and helping people in need is a lot of satisfaction. And I think if I can provide them with those services, I think that's the biggest satisfaction that I get, which no money can bring. Today I'm very pleased that a mission impossible of saving lives has been accomplished, and millions of people have been rescued without discrimination. But I hope that we can establish safer communities to live, work and travel in Pakistan. That's our vision for the next 10 years.
अगर आप कमाते हैं तो अपनी ज़ात पे अगर खर्च ना करें तो फिर कहाँ किया? इस मामले में मैं अपनी फैमिली में, अपने ख़ानदान में बड़ा फजूल खर्च मशहूर हूँ। देखिए 91 में हमने ये मैगजीन स्टार्ट किया था और ये दुनिया का टॉप, पाकिस्तान के टॉप जर्नल्स में था, जो रिसर्च ओरिएंटेड इलस्ट्रेटेड जर्नल था। हम कम से कम अब जो है 77 साल बाद हम एक कौम इकट्ठे हो जाए। हमारे दौर के अंदर 34 अरब डॉलर रेमिटेंस जो था ओवरसीज पाकिस्तानी भेज रहे थे। कायदे रहमतुल्लाह अलैह फरमा गए हैं कि काम का टाइम बढ़ाएं, काम करें। आप यकीन करें कि नॉर्दर्न एरिया के पैकेजेस इतने ज़्यादा है, अभी पाकिस्तानियों ने नॉर्दर्न एरिया को भी नहीं अभी इतना एक्सप्लोर किया। आप लोगों ने पहले भी आवाज़ उठाई इस्लामाबाद में गैर, बिजली के ख़िलाफ़, महंगाई के ख़िलाफ़, तो आप लोगों की आवाज़ सुनी नहीं गई। देखिए, जमात इस्लामी ने महंगाई के ख़िलाफ़ और ख़ास तौर पर बिजली के बिलों में होश रुपा इजाफे के ख़िलाफ़ हमने आवाज़ बुलंद की थी। 300 यूनिट तक का उन्होंने कहा था कि हम सोलर सिस्टम देंगे। हाँ जी। कराची में, सिंध में देना शुरू किया हुआ, वहाँ वो हमारी हुकूमत है। पूरे पाकिस्तान में हमारी हुकूमत नहीं है। टैक्स देना हर शख्स की जिम्मेदारी है, हर ताजिर की जिम्मेदारी है। ट्रस्ट है लोगों का। मुझे लगता है आप लोगों तक रसाई नहीं आपकी हो पाती। आपका मंशूर क्या है? किसी सियासी जमात में इतना अच्छा इंतखाबी कमीशन नहीं है। अच्छे कंटेंट देखना चाहें तो फिर डेफिनेटली आहिस्ता सा चेंज तो आएगा ना, ग्रेजुअल। तमाम 12 ज़ोडिक साइन के ऊपर मुझे अबूर है। दुबई के पास वसाइल थे, आज पाकिस्तान के पास तो बहुत कुछ है। जो सेफ सिटी के हवाले से है वो अब तो काफी ज्यादा जो है दोबारा वर्किंग में आ गए हैं। हाँ, एक टाइम आया था जब काफी कम हो गए थे। 50 तो स्टार नहीं हो सकते, स्टार तो 3-4 ही होंगे किसी भी फील्ड के। बच्चे को देखा कि वो एक ऐप के अंदर घुसा हुआ है जिसको टिकटॉक कहते हैं। Hello, I'm Alan Curry. I'm bringing you a show badge of honour on my successful life in the police service to the rank of Chief Superintendent. Talking about me, and hopefully I'm saying some nice things about myself. There's a couple of bad ones, I'm sure, as well. And I don't like criminal activity. As opposed to the other way around, when you arrest somebody and have to find the evidence. And the feeling of doing something for somebody else, I don't know how you
can get that from anybody else. आपकी होस्ट वजीहा खालिद। वेलकम टू माय शो स्ट्रीट बाइट्स। एक नई और मज़ेदार एपिसोड के साथ आज हम मौजूद हैं बरकत मार्केट, जहां हमें मज़े मज़े के खाने बनकर तैयार होते हुए और लोग अपनी फैमिली के साथ उन खानों को एंजॉय करते हुए नजर आ रहे हैं। तो आइए लोगों से करते हैं मज़े मज़े की बातें। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आप कैसी हैं? हाँ, मैं भी ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। आपका नाम? अली अवान नाम है। तो क्या करते हैं आप? मैं फार्मास्यूटिकल में जॉब करता हूँ। तो कैसे जा रही है आपकी जॉब? ज़बरदस्त, काफ़ी देर हो गई है। इंजॉय भी कर रहे हैं काम को और स्ट्रगल भी कर रहे हैं। अरे वाह, तो कितनी देर हो गई? मुझे ऑलमोस्ट तकरीबन कोई 11 से 12 साल हो गए इसी फील्ड में। ज़बरदस्त। तो इधर क्या करने हैं? वैसे ज़रा ये कॉम से कंप्यूटर पे काम था प्रिंटर के हवाले से, तो उधर आया था मैं। तो कुछ खाया भी आया? नहीं, अभी तो फ्री हुआ हूँ, जस्ट बस सोच ही रहा हूँ। इतनी बड़ी मार्केट है तो समझ में नहीं आ रहा कहाँ से शुरू किया जाए। अच्छा, वैसे क्या खाने का इरादा, देसी या फास्ट? फास्ट फूड ही मोस्टली तो होता है। देसी क्योंकि रात के टाइम थोड़ा सा सूटेबल करता है, तो दिन में हल्की फुल्की भूख होती है तो फास्ट फूड से काम। फास्ट फूड में वैसे आप क्या पसंद करते हैं ज़्यादा? फास्ट फूड में मोस्टली तो ये बारबेक्यू टाइप हो जाता है, और या फिर इस टाइम जिस तरह ये स्टेक है इनकी, ये ग्रिल हॉट वालों की और बिरयानी किंग वालों की, तो वो काफ़ी पसंद है और अच्छा एक्सपीरियंस रहा है उसका ना। अरे वाह, ज़बरदस्त हो गया। तो आपको खुद भी कुछ बनाना आता है? बना लेते हैं? नहीं, मैं अंडा उबाल लेता हूँ। इतना बड़ा काम कर लेते हैं? हाँ जी, बस। चलो कोई बात नहीं, अपने लिए वो भी बड़ा है। जी जी, बिल्कुल ऐसे ही है, के लिए इतना ही काफ़ी होता है। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ कि अगर आप अगर आप कोई एक्टर होते तो कौन सा रोल जो आप प्ले करते, या कौन सा रोल आपको पसंद है जो प्ले करना? विलन का। विलन का, उसकी वजह? क्योंकि हीरो की क्वालिटीज़ नहीं है। विलन पहले वो सुकून में होता है, लास्ट में जाके उसे थोड़ी मुसीबत उठानी पड़ती है। एक्चुअली हम हर किसी की लाइफ में जो है ना वो विलन का किरदार अदा कर रहे होते हैं, तो सबके लिए हम हीरो नहीं होते, तो वो बेटर एक्ट हम कर सकते हैं मेरे ख्याल में। अच्छा, चलिए विलन की कोई लाइन शाइन आती है आपको? विलन की अब काफ़ी विलन है वैसे तो मूवीज़ में, लेकिन सबका नहीं है इतना कोई आइडिया। कोई आप मुझे किसी एक्टर का कहेंगे तो मैं शायद कोई याद आ जाए मुझे, मैं बोल दूँ। विलन तो मैं देखती नहीं हूँ, लेकिन आपने मूवीज़ देखी होंगी ना? मूवीज़ कम ही, बस नेटफ्लिक्स जब से आया तो शुरू से बस वो डाउनलोड किया हुआ, उसी पे मूवीज़ और सीरीज़ वगैरह देखते हैं। तो फिर कोई क्या देखते हैं आप, मुझे ये बताओ। सीरीज़ देखते हैं, जैसे मनी हाइस्ट जो है वो बड़ा अच्छा रहा है, उसमें काफ़ी अच्छा। और ये तो ज़बरदस्त हो गया। चले, उसमें जो विलन है ना उसका मुझे रोल प्ले करके कोई डायलॉग। उसमें तो विलन नहीं था कोई भी इस तरह का इतना। जिस विलन से इंस्पायर होकर आप कह रहे हैं ना कि मैं विलन का रोल प्ले करना चाहता हूँ, वो विलन का रोल प्ले करके नहीं, इंस्पायर तो मैं किसी से भी नहीं हूँ। मैं या तो अपनी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड आपको कह रहा हूँ ना। चलिए, उसी से ही कोई मुझे डायलॉग बोल के दिखा। जैसे कि मोस्टली हमें लोग कहते हैं कि ये तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। तो मैं उसी से रिलेटेड कह रहा हूँ कि हम किसी की लाइफ में अच्छे नहीं है, तो हम विलन का रोल जो है ना वो विलन का रोल ही परफेक्ट मेरे ख्याल से तो वही बेस्ट है। अच्छा, चलिए कोई शेर शायरी आती है आपको? शेर, हाँ, ये है कि आपको देख के कह देता हूँ थोड़ा सा कि जमाले कमसनी को देख कर नज़रें यूँ कहती हैं, जमाले कमसनी को देख कर नज़रें यूँ कहती हैं,
अभी से तुम क़यामत हो शबाब आया तो क्या होगा। अरे वाह, थैंक यू सो मच, अच्छा था। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। आपका नाम? शहजाद मुनीर। तो क्या करते हैं आप? मैं प्रॉपर्टी से रिलेटेड। कैसे जा रहा है आपका काम? आजकल ज़रा स्लो है। आजकल ज़रा स्लो है, चले कोई बात नहीं। आज जो चल रहे हैं। अच्छा, वैसे इधर क्या करने आए? इधर ज़रा बच्चों के साथ खाने पीने आए थे। क्या खाया है? वो बर्गर वगैरह खाए थे, यहाँ से कुछ जूसेस कोई ये वो। हो तो आप फास्ट फूड या देसी, कौन से बंदे आप? फास्ट फूड खाया है। फास्ट फूड खाया है, लेकिन पसंद आपको क्या? मुझे देसी। देसी? देसी में क्या? फास्ट फूड खाना है, बच्चे आजकल के बच्चे आपको पता है वो खाते हैं ज़्यादातर वो। तो आप देसी में क्या पसंद करते हैं? देसी में कढ़ाई हो गया, मटन कढ़ाई, इस तरह की चीज़ें, मतलब देसी जो भी होता है, जैसे फिश हो गई और अपना क्या नाम लेते हैं टिक्के शिक्के को, ये सब पसंद करते? हर चीज़ पसंद करता हूँ। अच्छा, वैसे खुद भी कुछ बना लेते हैं? खुद भी कुछ बना लेते हैं? नहीं, मैं खुद कुछ नहीं बना लेता, मैं खुद कुछ नहीं आता। चाय बना लेते हैं, ये बड़ा है। मैं अपनी मतलब की ज़बरदस्त बनाता हूँ। अच्छा, अपने लिए वो भी? वो नहीं, अपने में लिए, क्योंकि मेरे तरह जो मैं पीता हूँ वो घर वाले भी नहीं बनाते। अच्छा, सबसे अलग पीते हैं? नहीं, मैं खुद ही बना के पीता हूँ। ज़बरदस्त हो गया। तो फैमिली में अपनी बेगम के हाथ का बना हुआ क्या ज़्यादा पसंद करते हैं आप? मेरी बेगम सारे ही खाने बहुत अच्छे बनाती है। बेगम साथ आई हैं? नहीं, बेगम नहीं साथ, बच्चे हैं, वो वीज़ा लेने गए हुए थे, वीज़ा लगा हुआ था बच्चे का, तो वो बोले वहाँ से आ रहे हैं वापस। तो बेगम को क्यों नहीं लाया आप? वो मैं था, मेरा हमजुल्फ है, मेरी बेटी है, उसकी बेटी है, मेरा बेटा है। अब गाड़ी में 5 बंदे ही आ सकते हैं, इससे ज़्यादा तो नहीं आएंगे ना। तो पहले बेगम की जगह रखनी थी, फिर बाकी सबको बिठाना था ना। बेगम को घर में बिठा के हमें वो इंतज़ार कर रही है। मेरा इंतज़ार करो, मैं अभी आया। पीछे से हम आए अपने अपनी फैमिली के साथ थे, वहाँ से फिर हम अलहदा हो गए, क्योंकि हमने जाना था, सारा दिन लग जाना था। तो वो दिन के वक्त तो बेगमों के साथ निकलने वक्त होता शाम का। हाँ। अच्छा, वैसे आप किधर से हैं? लाहौर से। लाहौर से हैं, यानी फिर खाने पीने के शौकीन? खाने पीने का शौकीन तो मैं हूँ शुरू से ही, बचपन से ही। यानी आप सिर्फ खाने पीने के शौकीन है, बनाना आपको कुछ नहीं? बनाना मुझे कुछ नहीं आता, बस चाय वगैरह इस तरह की बस चीज़ें। अच्छा, अगर मैं आपसे क्वेश्चन करती हूँ कि अगर आपको एक रोल प्ले करना पड़े, एक एक्ट करना पड़े, अगर आप एक्टर होते तो कौन सा रोल प्ले करते? मैं मतलब किस टाइप का? जैसे मतलब किसी मूवी में जो सीन आपने देखा हो, आपको लगता हो कि ये रोल मैं प्ले कर सकता हूँ। मैं एक अच्छा एक्टर तो नहीं बन सकता, मेरा मतलब मैं प्ले में ये है कि आप अब तो खैर जो एज है इसमें तो फादर का रोल ही अच्छा लगेगा। अगर जवान होते तो शायद कोई और अच्छा सा रोल कर लेते। नहीं, फादर का रोल अच्छा से, आप फादर का रोल प्ले कर सकते हैं। तो इस वक्त मतलब किस टाइप के फादर? थोड़े पाबंदियों वाले या फिर आज़ादी वाले, किस टाइप? दरमियाने। चलें, उसका थोड़ा सा डायलॉग बोल के दिखाएं, मैं आपकी बेटी और आप मेरे बाबा। अच्छा, मसलन क्या बोलूँ मैं? हाँ, तो अपनी बेटी को कुछ नहीं बोलेंगे? नहीं, मैं अपने बेटे को अच्छी सी हिदायत दूंगा कि भाई जो भी वो कर रहा है, जा रहा है, बाहर जा रहा है, या जो भी वो अपने फ्रेंड के साथ, अगर वो मुझे महसूस होता है कि वो सही रास्ते पे नहीं जा रहा, तो मैं उसको बताऊंगा कि भाई तुम सही रास्ते पे जाओ, उसको समझाऊंगा। जैसे कि अब ड्रामों में लोग आपने देखा होगा अक्सर, उसी तरीके से उसी तरीके से करूँगा ना। अरे वाह। तो वैसे आपको कोई शेर शायरी आती है? शेर व शायरी पहले आती थी, पहले काफ़ी शौक भी था, लेकिन अब बस देखते हैं एक नज़र तो बस वो उसको इंजॉय करके निकल जाते हैं। अब याद भी कोई नहीं है इतना, पहले तो काफ़ी याद रहा करते थे, जो है फराज, मोहसिन नकवी और ये वो इस तरह के। अब वो तो रहे नहीं वैसे भी दुनिया में, तो अब वो याद भी नहीं रहे। हाँ, नहीं, वो याद करने पे है कि याद किया जाए तो कोई ना कोई आ जाए ज़हन में शेर, लेकिन इस वक्त तो ज़हन में कोई शेर याद नहीं। चलिए, कोई बात नहीं, कोई मैसेज दे दें। किन लोगों को मैसेज दूँ? पब्लिक को मोटिवेशन मैसेज। पब्लिक को क्या मोटिवेट करूँ? पब्लिक आजकल कितनी मोटिवेट ऑलरेडी हो चुकी है, और इतनी ज़्यादा सोशल मीडिया
ने इतना मोटिवेट कर दिया बच्चों को। मेरा ख्याल है हाँ, हमें तो पता ही नहीं होता था अपने दौर में किसी चीज़ का, लेकिन आजकल के बच्चों को हर चीज़ का पता है। उन्हें मोटिवेट आप क्या करेंगे, वो खुद मोटिवेट हैं। तो बाकी हम तो सिर्फ उन्हें सलाह अच्छी दे सकते हैं। तो जब से वो घर से बाहर निकलते हैं तो फिर मोटिवेशन उनको और भी बाहर से बाहर मिल जाती है। लेकिन आप भी अपना ओपिनियन पेश करें ना, बताएं कैसे आप मोटिवेट कर सकते। नहीं, मैं तो बच्चों को ये मोटिवेट करूँगा कि बच्चे जो है वो अपना करियर बनाएं, बजाय कि वो इधर उधर अपना वक्त ज़ाया करें। और बच्चे आज छोटे नॉर्मली बच्चे आजकल छोटे तो पबजी गेमें शेमें ये वो यहाँ आवारागर्दियों में ज़्यादा मसरूफ़ हो जाते हैं, लेकिन ये टाइम ऐसा नहीं रहा। अब हालात वो नहीं रहे जो पहले थे। अब हालात ये हैं कि अब बंदा अपने आप को सेट करे किस तरह। अब बच्चों को इस तरीके से मोटिवेट किया जाए कि बच्चे अपना मुस्तकबिल बना सकें। बेहतर मुस्तकबिल बनाएंगे तो बेहतर लाइफ गुजारेंगे, वरना तो आजकल के जो हालात हैं वरना बच्चे बर्बाद हो जाएंगे सारे जितने भी हैं। आने वाला वक्त और सख्त आ जाएगा दिन ब दिन जैसे कि चल रहे हैं हालात। ये ठीक है, अपने करियर पे फोकस करें, वो ज़्यादा फोकस करें जी, करियर पे फोकस करें। आप भी तो अपना करियर कर रही हैं ना इस वक्त, ये आपका करियर ही है ना जिसमें आप लगे हैं, ठीक है ना। आप इसमें हैं, कोई किसी और में होगा, हर बंदा किसी न किसी फील्ड में है, ठीक है ना। वो उसी में मेहनत करे तो अल्लाह जज़ा भी देता है इंशाल्लाह, वक्त के साथ साथ हर एक को। ये तो नहीं है कि एकदम तो किसी को कुछ नहीं मिलता, उसके लिए कुछ टाइम सर्वाइव करना पड़ता, मेहनत करनी पड़ती है। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। बाय द वे थैंक यू सो मच। हाँ जी, थैंक यू। Hi, I'm Uma Malhotra and I welcome you to my show Glow and Beyond with Uma Malhotra. Why should I get that facial? Why should I go for a Repicharge facial then an O3 facial? We do the research for you. So we make sure we give you the best. For example, you got fat lash. A client was allergic to fat lash, so I did a London lash patch test on her. She was absolutely fine with London lash. So I used the London lash. इस वक्त फूलनगर शहर की सब्ज़ मंडी में खड़ा हूँ और इस वक्त गर्मी के फलों में बहुत ज़्यादा फल हैं, लेकिन तरबूज एक ऐसा फल है कि जो अपने जायके और खुशबूदार और मिठास की वजह से सबसे ज़्यादा मशहूर है। वैसे तो इस वक्त सेब, आड़ू, अमरूद, खुरमानी, लुगाट भी हैं, लेकिन वो महंगे फल हैं जो कि गरीब आवाम की क़ुव्वत ख़रीद से बहुत ज़्यादा हैं। गरीब आवाम उन फलों को नहीं खरीद सकी, लेकिन तरबूज एक ऐसा फल है कि जो कम कीमत में 40 रुपये किलो के हिसाब से आवाम इसे ख़रीद रहे हैं और बड़े ज़ौक़ शौक़ से इसे खाते हैं और लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। तरबूज फल बहुत अच्छा है, मौसम के लिहाज से जायका भी अच्छा होता है, मीठा भी अच्छा है और ये बाकी फलों की निस्बत जायके में अच्छा है और ये हमेशा जो है ना मौसम के लिहाज से इसको खाना चाहिए, बेहतरीन फल है। और हम ये गाड़ियों के हिसाब से आते हैं, हर रोज़ 1 गाड़ी 2 गाड़ी सेल करते हैं जिसमें 80 मन 50 मन ऐसे वज़न होता है। तो ये तरबूज आपसे लोग शौक़ से ख़रीदते हैं? माशाल्लाह शौक़ से ख़रीदते हैं। ये देखिए आपने कि इस गर्मी के मौसम में लोग सेहत अफ़ज़ा और खुश जायका तरबूज बड़े शौक़ से ख़रीद रहे हैं और खा रहे हैं। मेरा भी आवाम को ये मशवरा है कि इस गर्मी के मौसम में सबसे सस्ता फल तरबूज है, ये इस्तेमाल करें और सेहतमंद रखें। कैमरा टीम गफ़ार अहमद के हमरा डॉक्टर लियाकत अली, साउथ एशिया ग्लोबल न्यूज़, फूलनगर।
अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? वालेकुम सलाम, ठीक। आपका नाम? राशिद अमीर। तो क्या करते हैं आप? हमारा ये मिनट सोडे का काम। कैसा जा रहा है आपका? काम ठीक है, बस नॉर्मल ही है। गर्मी इतनी अच्छा जा रहा हो। हाँ जी ठीक है बस। अरे वाह। नहीं, बारिश थी, जब बारिश हो फिर थोड़ा सा कम हो जाता है, बाकी ठीक रहता है। गर्मी नहीं, कोई नहीं, हाँ गर्मी शर्मी मौसम अभी तो बदलता जा रहा है। हाँ जी बिल्कुल। अच्छा, वैसे मार्केट में पसंद क्या आपको, देसी या फास्ट? ये हमें फास्ट ही पसंद है ज़्यादातर, इधर फास्ट फूड ज़्यादा पसंद है। फास्ट वाले हैं आप तो? फास्ट में क्या ज्यादा पसंद करते? फास्ट में बर्गर है, शवारमा है और वो सारा फास्ट पसंद? हाँ स्टेक्स वगैरह होती। अच्छा, वैसे खुद भी कुछ बना लेते हैं? खुद हम मिंट सोडा, ब्लूबेरी ये चीज़ें बनाते हैं। नहीं, फास्ट फूड में से? फूड में अभी तो नहीं, सर्दियों में हम शुरू करेंगे, सूप का, यखनी का और दूसरा एक दो चीज़ें काफ़ी वगैरह है, चाय। ये तो ज़बरदस्त हो गया। अच्छा, वैसे मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ कि अगर आप एक एक्टर होते तो कौन सा रोल है जो आपको लगता है कि आप बेस्ट प्ले कर सकते थे? कौन सा रोल बेस्ट प्ले कर सकता है? अगर एक्टर होता, एक्टर वैसे ना ही बनाए हैं। लेकिन मैं बना रही हूँ ना, तो अब बन जाए। आप ये सारी बातें साइड पे रखें और मुझे बताएं कौन सा रोल आप बेस्ट प्ले कर सकते? हीरो का ही कर सकता था मैं। हीरो कौन सी मूवी का या कौन से ड्रामे का? हीरो कोई एडवेंचर मूवी का, जैसे जंगल में कोई जाते हैं, थ्रिल वगैरह है। अच्छा, वैसे आपने देखी है कोई एडवेंचर मूवी? हाँ जी बेशुमार। बेशुमार। फिर तो आपको उनके डायलॉग्स भी याद ही होते हैं। नहीं, वो इंग्लिश होती हैं, उनके डायलॉग कम ही याद होते हैं। फिर आप देख लेते हैं, आपको समझ आ जाती है? हाँ जी। अरे वाह। वैसे तो अक्सर ट्रांसलेट भी होती है। हाँ, उर्दू डब में भी होती हैं। हाँ, वो देखते हैं? हाँ। हाँ, तो फिर तो डायलॉग बहाते होंगे ना? होते हैं लेकिन ज़हन में बैठ जाते हैं जब इतने सारी देखो तो आप मुझे कोई एक डायलॉग बोल के सुनाए, मुझे एज अ हीरो। डायलॉग कोई याद नहीं वैसे इस तरह का कोई अभी। चलिए, मैं आपको सिचुएशन देती हूँ ना मैं आपको, तो फिर आप मुझे डायलॉग बोल के दिखाइएगा। जैसा कि एडवेंचर आपने बोला, तो आप लोग एडवेंचर पे जा रहे हैं, पहाड़ से नीचे लड़की गिर गई, लड़की आपको बुला रही है, लड़की हीरोइन है, हीरोइन आपको बुला रही है, और आप उसको आगे से क्या कहेंगे? आपका नाम क्या? राशिद, बचाओ मुझे, बचाओ। वो फिर आप आगे से क्या कहेंगे? उससे मैं यही कहूँगा, ठीक है मैं आ रहा हूँ, रुको बस 2 मिनट, गिरना नहीं है, बस पहुँच रहा हूँ तुम्हारे पास। गिरना नहीं है, ये जबरदस्त। मेरा इंतजार करो, लटक के वेट करती रहे। बस। अच्छा, गाने शाने आते हैं आपको? नहीं। पोइट्री भी इतनी खास नहीं। अच्छा, वैसे कभी अपने आप से झूठ बोला आपने? अपने आप से? अपने आप से बंदा झूठ कैसे बोल सकता? मतलब जैसे कि सिचुएशन हो रही है, लेकिन आप कह रहे हैं नहीं, ये नहीं हो सकती, मतलब आपको पता भी है वो हो रहा है, लेकिन फिर अपने आप को तसल्ली देने के लिए नहीं। वो ये होता है कि बंदा बस अपने आप को धोखा ही देता है। हाँ, वही धोखा दिया है कभी आपने? नहीं। चले, कोई नहीं पता है ये गलत काम है, फिर खुद को क्या धोखा देना है, तो गलत ही। बाय द वे, कोई मैसेज दे दे। पाकिस्तान के बारे में कुछ सोचें, इस मुल्क के बारे में मोटिवेट लोगों को करें, कोई ऐसे सवाल क्या करें कि लोगों को थोड़ा शऊर पैदा हो कि यार हमारा माशरा किधर जा रहा है, हम कैसे चलना है, हमारे हमने किस बंदे को सिलेक्ट करना, कौन सा हमारा लीडर होना चाहिए। ये चीज़ें ज़रा मोटिवेट किया करें कि लोगों को पता लगे। हमारे इधर असल में है बहुत ज़्यादा तफरीक पैदा हो गई है, जो सही बंदा है उसको आगे आने नहीं देते, जो गलत बंदे हैं उनको सारे सपोर्ट करते हैं। तो मेरा यही पैगाम है कि जब भी कोई वोटिंग हो या इलेक्शन हो, कोई ऐसे बंदे को पाकिस्तान पे लाएं जो हमारे मुल्क का अच्छा सोचे, आवाम का सोचे, ये ना कि जो पहले आ रहे हैं उसी तरह का काम करो। बस यही पैगाम है कि हमारे मुल्क के लिए कुछ सोचें, जो ठीक है उनको, बस यही मेरा पैगाम। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, ठीक है। आपका नाम? शेर अली। उस्मान गनी। दिलावर खान। तो क्या करते हैं आप? हम बन भी पुलाव के वेटर हैं। तो तीनों आपस में लगते क्या? हम भाई हैं। भाई हैं आप तीनों? वो तो किधर से आप? सरगोदा से हैं। कैसा जा रहा है आपका काम? अच्छा जा रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छा जा रहा है। कितने देर से कर रहे हैं आप ये? साल से। साल से? तो साल में ही अच्छा हो गया, अब दोबारा छोड़ना नहीं। इससे पहले क्या करते थे? इससे पहले आवारागर्दी। आवारागर्दी करते थे, आवारागर्दी के बाद डायरेक्ट ये शुरू कर। अरे वाह। अच्छा, वैसे स्कूल टाइम या कॉलेज टाइम, कौन सा टाइम ज़्यादा अच्छा? स्कूल टाइम।
उसकी वजह? उसकी वजह वैसे ही बस दोस्त के साथ बचपन था, बचपन था इसीलिए बस वो पसंद था। जी उसकी कोई ऐसी मेमोरी जो अभी तक याद हो? स्कूल की टीचरें, ब्रेक में घर जाना, भागना। हाँ क्या कह रहे? ब्रेक में भाग जाना। हफ्ता बैग स्कूल में पढ़ा रहता था, उसकी वजह? उसकी वजह हमें स्कूल अच्छा नहीं लगता था पढ़ना। फिर भी स्कूल टाइम ज्यादा अच्छा था। क्या वारा कर दी इसमें ज्यादा? एक खूबसूरती बात है जो कान पकड़ के साथ मारते हैं। अच्छा आप क्या कहते? मैं भी आवारा करता बनू भी। यानी आप सब बनू बीफ पुलाव के ही हैं? सब बनू बीफ पुलाव के मुलाजिम। अच्छा वैसे आप हैं किधर से? सरगोदा। सरगोदा से। अच्छा उधर की कौन सी ऐसी डिश है जो आपको लगता है लाजमी ट्राई करनी चाहिए? हमारा वहाँ फेनी ज़्यादा, फेनी और मेहंदी। मेहंदी वो क्या होते हैं? ये जो सर पर लगाते हैं। अच्छा मेहंदी मुझे लग गया मेहंदी। हाँ सही है, समझ आ गई है। अब आप किधर से? गुजो सरगोदा। पूछता नहीं है मैं भाग। हाँ बोले, आप बोले किधर से? मैं पेशावर से। अच्छा पेशावर की कौन सी ऐसी डिश है जो आपको लगता है लाजमी ट्राई करनी? चपली कबाब बहुत मशहूर है उधर की। उसकी वजह ये है कि बस हम पठानों को गोश्त बहुत पसंद है, इसलिए मेहनत से बनाते हैं, प्यार मोहब्बत डालते हैं, यही वजह है। अच्छा वैसे आप खुद भी कुछ बना लेते हैं? मैं खुद तो क्रिकेटर हूँ, प्रोफेशनल, इधर पार्ट टाइम काम करता हूँ, तो खुद कोई पन नहीं है, चाय शाय बना सकते हैं। चाय शाय वो भी बड़ी बात है, बना लेते हैं। अच्छा आप कुछ बना लेते हैं? नहीं। आपको कुछ बनाना आता है? ये चपली कबाब। चपली कबाब जबरदस्त हो गया, किसी को तो कुछ आता है बनाना। अच्छा मैं आपको एक क्वेश्चन कहती हूँ कि अगर आप एक एक्टर होते तो कौन सा रोल है जो आपको लगता है आप बेस्ट प्ले कर सकते थे? ड्रामे और फिल्में तो देखते ही होंगे आप लोग, है ना? जी। हाँ चलें जबरदस्त। तो फेवरेट फिल्म या ड्रामा कौन सा? बजरंगी भाईजान। बजरंगी भाईजान, उसमें कौन सा रोल आपको बहुत पसंद है? मुझे मुन्नी पसंद है उसकी, अब काफी बड़ी हो गई है ना। अब वो काफी बड़ी हो गई है। अरे नहीं, लड़कों में कौन सा रोल उसका पसंद है? लड़कों में हीरो का, विलन का या किसी का जो सरहद पार के पाकिस्तान आ जाता है, अच्छा बचाते हैं, माँ के पास लेकर आते हैं, वही। और आप कौन सी मूवी यहाँ देखते हैं ड्रामा? तेरी खुदगर्जी। अच्छा उसमें कौन सा रोल आपको बहुत पसंद है? पसंद कोई नहीं, सारे मुझे वैसे ही लगा, मेंटल लग रहे हैं। तो कौन सा रोल आपको लगता है कि आप करते तो ज्यादा अच्छा होता? फिलहाल दी गाड़ी मसरूफ होते हैं काम में, ऐसे नहीं यार, तवज्जो नहीं करते। नहीं चौधरी, मैं कौन सा रोल दे रही हूँ, मैं बस पूछ रही हूँ। तवज्जो नहीं करते। तवज्जो नहीं करते तो फिर देखने का फायदा देखा ही ना करो, टाइम पास। जबरदस्त। और आपको मैं पूछी थी, हाँ आपको मैं पूछी जी, कौन सी मूवी, कौन सा ड्रामा? खुदा और मोहब्बत। ये सीधा बंदा है। खुदा और मोहब्बत, अरे वाह। इसकी उसका कोई, अच्छा उसका कोई एक डायलॉग बोल के सुना। यही है। क्या क्या जो इसने बोल दिया वो नहीं, मैंने सुना नहीं, आप बोले। डायलॉग नहीं याद उसके, बस सारा देख लिया। अच्छा वैसे आपको क्या लगता है, आप हीरो होते ज्यादा परफेक्ट होते या विलन का रोल आपको ज्यादा पसंद? यार हम पठानों के साथ तो विलन अच्छा लगता है। विलन अच्छा लगता है? होते हैं बचपन से ही होता है, तो विलन वाला अच्छा लगता है, क्योंकि हीरो हमें मानता नहीं है। और चाहे पाकिस्तान की पॉलिटिक्स हो या बुरा बातें मैं कह रहा हूँ, ये आपकी जो ना इधर इस्लामाबाद, पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, इधर भी हम पठानों को विलन ही समझते हैं ना, तो इसलिए विलन का रोल हम अच्छा अदा करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम, ठीक हूँ मैं माशाल्लाह। आपका नाम? मोहम्मद रईस। क्या करते हैं आप? मैं इधर जॉब करता हूँ जूस में। तो कैसी जा रही है आपकी जॉब? ठीक है माशाल्लाह, ठीक। कब से करें आप ये काम? तकरीबन 10 साल हो गए। अच्छा बरकत मार्केट का खाने पीने में आपको क्या ज्यादा अच्छा लगता है, फास्ट फूड या देसी? कढ़ाई वगैरह इधर के मजे किया है। यानी देसी? जी। देसी की वजह सिर्फ कढ़ाई पसंद होती है वैसे? देखिए अभी तो ज़्यादा जो लाहौर का खाना बन गया वो बर्गर हैं, ग्रिल बर्गर जो इधर बरकत मार्केट का मशहूर है, लेकिन जो बाहर से बंदे आते हैं वो कढ़ाई वगैरह इधर ज़्यादा खाते हैं। तो आप खुद भी कुछ बना लेते हैं? मैं इधर जूस पे काम करता हूँ, मैं जूस वगैरह पीता हूँ, कढ़ाई वगैरह का इतना शौक नहीं हूँ, लेकिन कभी कभी। घर में कभी कुछ बना के खाया है आपने? हाँ क्यों नहीं, हम पंजाब के रहने वाले, हम तो ये कढ़ाई वगैरह देसी चूचे के बनाते हैं, देसी घी में खुद बना लेते? जी जी, घर वाले से ख्वाब तो फिर खुद बना लेते हैं, मिसाले वगैरह से वो देख के खुद बना लेते हैं, लेकिन
देसी वगैरह चूचे हम खुद बनाते हैं। अरे वाह, जबरदस्त हो गया। मीठे में आप क्या पसंद करते हैं? वैसे मीठा पसंद करते हैं नमकीन? नमकीन चावल चने वाले हो। अरे वाह, बेगम के हाथ के बने? अब चाहे बेगम के चाहे माँ के, ज़्यादा टेस्ट माँ के हाथ का होता है। बिल्कुल, ऐसे तो खुद भी कुछ बनाते हैं? नहीं, कभी नहीं इस तरह की शौक। जब घर वाले हो तो खुद ज़रूरत ही नहीं पड़ती। जब घर वाले हो तो फिर घर वाले ही बनाए? जी हाँ। ऐसा क्यों है? देखिए वो खुद मैं तो इस नज़दीक नहीं चूल्हे के वगैरह के पास देते, लेकिन वो खुद बना के दे देते हैं हम, कोई अगर ऑर्डर करे तो। अच्छा जी, जबरदस्त हो गया। वैसे कभी अपने आप से झूठ बोला आपने? हर रोजाना कोई ना कोई अपने आप में बंदा झूठ बोलता है। तो लास्ट टाइम क्या झूठ बोला था आपने अपने आप से? नहीं, मुझे नहीं इस तरह कोई याद। लेकिन बोलते हैं? जरूर बोलते होंगे, लेकिन हमने कभी झूठ नहीं। अच्छा, वैसे गाने सुनते हैं? नहीं, कोई इस तरह का सॉन्ग नहीं सुनते। जलसे वगैरह सुन लेते हैं, ये PTI न्यूज़ लीग वगैरह, ये कभी कभी। अच्छा, शेर व शायरी? वो भी नहीं। चलें कोई बात नहीं, मैसेज कोई देते हैं? मैसेज मैं ये आवाम को देना चाहता हूँ कि अपने जिनकी शादियाँ अपने बच्चों के साथ खुश रहें, और खाने वगैरह ज़्यादा घर के खाएं, बाहर के ना खाएं। जितने घर के खाने खाओगे आपकी सेहत ठीक रहेगी। और जो बंदा बाहर का खाना खाता, देखिए हमने अभी, मुझे लाहौर में 10 साल हो गए। जब हम गांव जाते हैं तो हमसे हम घर वाले हमें कहते हैं, या भाई कहते हैं या बाप कहता है, यार आपको क्या हो गया, आपको क्या हो गया, आप काम ही नहीं कर सकते। ये शहर के खाने जब खा के तो बंदा वो ताकत नहीं रहती। जो घर का खाना है वो घर का ही खाना है, चाहे सूखी रोटी की, उसमें ताकत होती है। ये बर्गर वगैरह तो ये जिस तरह फार्मी कुकड़ी इंसान इस तरह का हो जाता है, लेकिन मशवरा है घर का खाना खाए, चाहे दाल खाए। यानी घर के खाने को प्रेफर करते हैं? बहुत अच्छा, ताकत है उसमें, इसमें ताकत नहीं। बट थैंक यू सो मच। थैंक यू। Hello, Dr. Anand here to tell you about unleashing your inner power. When you talk on Facebook with someone with your family far away, genuine communication takes place. Just look after yourself and grow in power and grow in finance and grow in status. If you stay in your comfort zone, you'll never find out who you are. Hello, I'm Robin Ashby. I'm a city councillor, I'm an advisor. I have done a lot of things in my life. Mix some hot Chileans, cool Jamaicans, Dominicans, Trinidadians and Bajans with some Ethiopians, Chinese, Vietnamese and Sudanese.
there were 282,000 people who came here to study. We can absolutely understand that first generation come here and they're in a strange land where they have to learn new customs, and it's cold as well. अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम जी, मैं ठीक हूँ, आप खैरियत से? हाँ, मैं भी ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। आपका नाम? रुखशान। रुखशान, क्या करते हैं आप? मैं जी जर्नलिस्ट हूँ। अच्छा, जर्नलिस्ट हैं, तो कैसे जा रहा है आपका काम? अल्लाह का शुक्र, बहुत अच्छा जी। अच्छा, वैसे इधर किसके साथ आए हैं? इधर अपनी टीम के साथ आए हैं। टीम के साथ आए हैं, क्या खाने आए हैं और क्या करने आए हैं? नहीं, हम तो काम के सिलसिले में आए हैं, वैसे भी खाते शाते रहते हैं इधर से। क्या पसंद है इधर का, फास्ट या देसी? इधर फास्ट फूड ही ज़्यादा पसंद किया जाता है। फास्ट फूड में क्या? इधर बर्गर्स भी हैं, सैंडविचेस भी हैं, शवारमा भी है, सब कुछ है। तो लेकिन आपको क्या पसंद? मुझे सब कुछ पसंद है, जो अच्छा बना हो। जो अच्छा बना हो सब पसंद है। अच्छा, वैसे आप खुद भी कुछ बना लेते हैं? नहीं, फ्राई कर लेता हूँ चीज़ें, वैसे नहीं बनाता। वैसे नहीं बना लेते। और अगर कोई अर्जेंट ज़रूरत पड़ जाए तो कैसे क्या करेंगे? अर्जेंट ज़रूरत पड़ जाए फिर बाहर से ही खाते हैं ज़्यादातर। बाहर से ही खाएंगे, यानी बाहर पे जिंदा है आप? नहीं, घर में बनाते हैं, फैमिली जो है वो बनाती है चीज़ें। फ्राई, चिकन फ्राई, ये वो कर लेता हूँ। यानी अपना गुजारा कर लेते? हाँ, नहीं गुजारा तो नहीं, खैर मजबूरी के तहत कभी करना। जब अगर करना पड़े तो अपना गुजारा कर सकते हैं। जी जी बिल्कुल। अरे वाह, ज़बरदस्त हो गया। अच्छा, कभी अपने आप से आपने झूठ बोला है किसी मामले में? अपने आप से झूठ नहीं, अपने आप से नहीं बोलता। अपने आप से नहीं बोलते, लोगों से बोलते? नहीं, बहुत कम, ना होने के बराबर। अच्छा ठीक है, यानी लास्ट टाइम झूठ फिर क्या बोला था? लास्ट टाइम झूठ क्या बोला था? लास्ट टाइम बहुत पुराना है, ताज़ा कोई नहीं बोला। अच्छा, यानी अभी कोई नहीं बोला, ऐसा ही होता है? हाँ बिल्कुल, झूठ कम बोलते हैं। झूठ कम बोलते हैं। अच्छा, ऐसी कौन सी डिश जो आप छोटे थे आपकी माँ आपको ज़बरदस्ती खिलाया करती थी? कौन सी डिश है? माँ आपको ज़बरदस्ती खिलाया करती थी? उसमें मैं तो वैसे फूड लवर हूँ, अपना फूड पसंद करता हूँ शुरू से ही, और कोई ऐसी डिश नहीं ज़बरदस्ती खिलाई जाए। अलबत्ता सब्जियों से ज़्यादा मीट, चिकन या इस तरह की जो चीज़ें हैं, बारबेक्यू, वो ज़्यादा पसंद करता हूँ। सब्जियों में थोड़ी दिलचस्पी कम है, खानी तो चाहिए वैसे, लेकिन नहीं खाता उस तरह से। और कौन सी ऐसी डिश थी जो आप बनवा के खाते थे ज़बरदस्ती, आज ये बनना चाहिए, मुझे बहुत पसंद? बिरयानी अच्छी है, उसके अलावा मटन कढ़ाई या चार गोश्त अच्छा है, और सब कुछ ही जिद करके सब कुछ ही खा लेते हैं। हाँ जी। अरे वाह, सब कुछ ही खा लेते हैं। अच्छा, कौन सा गाना आपका फेवरेट है, फेवरेट सॉन्ग? गाना जो सुनते हैं, बार बार सुनते हैं ना, वो वाला सॉन्ग? मैं ये आजकल जो अपना इंडियन सॉन्ग्स हैं, जो फास्ट म्यूज़िक है, शुभ के, वो पसंद करता हूँ। सिद्धू के पसंद करता हूँ। जो फास्ट म्यूज़िक है वो खैर इंग्लिश है या ये हिंदी है, वो पसंद करता हूँ ज़्यादा। ठीक हो गया, उसकी कोई वजह? कोई नहीं, फास्ट म्यूज़िक है, वैसे ही बंदा ज़रा एक्टिव रहता है। अच्छा, फास्ट म्यूजिक से बंदा एक्टिव रहता है। अच्छा, अगर स्लो म्यूजिक हो तो बंदे की एनर्जी डाउन हो जाती है? नहीं, स्लो पसंद ही नहीं करता इतना कोई। आपको क्या लगता है अगर स्लो हो तो बंदे की एनर्जी डाउन हो जाती है? हाँ बिल्कुल, जाहिर है म्यूज़िक का बड़ा इम्पैक्ट है। तो कौन सा फिर आप गाना हमें सुनाएं? आप सुनते तो हैं, तो फिर हमें कोई सुनाएं। नहीं, गाना नहीं गाता। क्यों नहीं गाते? सुनते हैं ना, तो सुनाएं, कोशिश करें। नहीं, गाना मेरे से। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप?
वालेकुम सलाम, अल्लाह का शुक्र। आपका नाम? कमर मोहिउद्दीन। तो क्या करने आए हैं आप, क्या करते हैं वैसे? मैं खाना खाने आया हूँ, वैसे मैं स्टूडेंट हूँ। स्टूडेंट हैं तो क्या पढ़ रहे हैं? मैं केमिस्ट्री एमफिल कर रहा हूँ। तो फ्यूचर क्या प्लानिंग है, क्या बनना है आप? मैंने केमिस्ट बनना है। केमिस्ट पढ़ना है। तो इधर किसके साथ आए हैं? ये दोस्तों के साथ। भाई कैमरा घुमा दीजिएगा, हम लोग गलत में समझ। अच्छा ठीक है, नहीं समझ गए, दोस्तों के साथ ही आए हैं। आपने जितने कॉन्फिडेंस से कहा है ना, सबको पता चल जी। अच्छा क्या खाने आए हैं, फास्ट फूड या देसी? देसी। देसी खाने आए हैं। वैसे देसी पसंद है या फास्ट फूड? देसी। अरे वाह, कहाँ से आप? मैं चीचावतनी से हूँ वैसे। चीचावतनी, तो वहाँ की कौन सी ऐसी डिश है जो आपको लगता है लाजमी ट्राई करनी चाहिए? चिकन कढ़ाई। अच्छा यानी देसी ही? देसी ही खाना चाहिए। अरे वाह, तो देसी खुद भी कुछ बना लेते हैं? हाँ जी, चिकन कढ़ाई अच्छा यानी जो पसंद है वो बना लेता हूँ। बना लेता हूँ। तो इधर भी चिकन कढ़ाई खाने का इरादा है? खा लिया। खा लिया, तो कैसा था इधर की चिकन कढ़ाई का टेस्ट? अच्छा था, टेस्ट अच्छा था, एम्बियंस अच्छा है, बाकी सारी चीज़ें अच्छी हैं। और कुछ हैं होटल्स हैं वहाँ पे रश बहुत ज़्यादा है, लेकिन इनका टेस्ट भी अच्छा है जाकिर वालों का, और लोग भी कम हैं। और माहौल कैसा लगा इधर का? माहौल भी अच्छा है। तो इधर किसके पास आए, कज़न के पास या वैसे घूमने फिरने? नई टेस्ट देने आया था पीयू में। तो कैसा रहा आपका टेस्ट? टेस्ट अच्छा रहा। अच्छा रहा है। अरे वाह, ज़बरदस्त हो गया। तो कभी अपने आप से झूठ बोला आपने? अपने आप से नहीं बोलते होते झूठ। बोलते हैं, क्यों नहीं बोलते, खुद को हौसला देने? नहीं, लोगों से झूठ बोला जाता है। अच्छा लोगों से तो बोला जाता है, हाँ ठीक है बोला जाता है। तो लास्ट टाइम कौन सा झूठ बोला? इससे बोला है अभी दोस्त से। क्या झूठ बोला था? कि मेरे अकाउंट में बस यही पैसे हैं। तो उसकी वजह क्या थी? क्योंकि ये पैसे देते नहीं हैं। तो फिर अब इनसे पैसे लेके खाया? नहीं, पैसे मतलब कह के तो आ जाते हैं अमेरिकन पे जाना है, लेकिन फिर अकेला बंदा तो नहीं दे सकता ना, तो झूठ बोला था इससे। अच्छा वैसे आप दोस्तों में खाने वालों में से या खिलाने वालों में से? मैं जवाब मिल गया आपको। खाने वालों में से। खाने वालों में? खिलाने वालों में से भी। अच्छा यानी दोनों है। फैमिली या फ्रेंड्स किसको ज़्यादा प्रेफर करते हैं? फैमिली। फैमिली। जाओ भाई, कोई ज़रूरत नहीं है तुम लोगों की। ये भी मेरी फैमिली ही है। नहीं ये फ्रेंड्स हैं। वो कज़न ही है सारे मेरे। अच्छा यानी इसीलिए फैमिली बोला जा रहा है। 7 कज़न्स आए इसीलिए फैमिली बोला। जी जी। तो ये छोड़ के ना जाओ? नहीं, वैसे दोस्त भी हैं, तो छोड़ के क्यों जाएंगे? चले जाएं, छोड़ के जाओ भाई। अच्छा इनके साथ तो मेरे पास है। अच्छा कोई फनी मेमोरेबल स्टोरी जो फ्रेंड्स के साथ हुई आपको अभी तक याद हो? नहीं, वो मैं ऑन कैमरा नहीं बता सकता। ऐसी कोई स्टोरी होगी? बहुत है ऐसी। अच्छा बहुत है, कोई एक तो निकल ही आएगी इस टाइप? नहीं, ऑन कैमरा बताने वाली कोई भी नहीं होती, दोस्तों के साथ जो होती है। अच्छा कौन सा टाइम अच्छा था, स्कूल का या फिर कॉलेज टाइम? स्कूल ऑब्वियसली। उसकी वजह? स्कूल बंदा इनोसेंट होता है, चीज़ों का पता नहीं होता, अब ज़रा जिम्मेदारियाँ भी आती हैं, तो स्कूल ही ठीक वाज अ गुड टाइम। अरे वाह ज़बरदस्त। तो गाना शाना आता है आपको? नहीं। पोइट्री देख के ऐसे मैं बेवजन पढ़ दूं, उसके बाद रील्स बनेंगी कि बेवजन शायरी पढ़ रहा है। चलेंगे तो अच्छा होगा ना, तो कोई बात नहीं। नहीं, बेवजन शायरी मैं नहीं पढ़ सकता, बाद में मेरा बहुत मजाक बनेगा। चले कोई बात नहीं, आप कोई मैसेज दे दें। मैसेज हंसें, खेलें, गाएं, सारा कुछ करें, अपनी ज़िंदगी जिएं। हाँ जी अपनी ज़िंदगी। बाय द वे थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं? ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। आपका नाम? मोहम्मद इरफान। तो क्या करते हैं आप? मेरा ये स्टॉल है। तो कैसा जा रहा है आपका काम? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन यहाँ पे साथ में होटल है, इनकी वजह से थोड़ा सा स्लो चलता है, क्योंकि खाने पीने की चीज़ें इधर ज़्यादा चलती हैं। तो खाने पीने में क्या पसंद है आपको इधर? मुझे तवा पीस पसंद है, बारबेक्यू पसंद है, बर्गर पसंद है। अच्छा यानी फास्ट फूड या देसी क्या ज़्यादा पसंद है? फास्ट फूड। फास्ट फूड में क्या ज़्यादा पसंद करते हैं? कि हम गाँव के रहने वाले, देसी तो हम घर में भी खा लेते हैं, यहाँ पे शहर में आते हैं तो फास्ट फूड ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। अच्छा किधर से आप? मैं फूल नगर शहर से। उधर की कौन सी ऐसी डिश है जो आपको लगता है लाजमी ट्राई करनी चाहिए? वहाँ पे देसी कढ़ाई मिलती है, देसी चप्पल कबाब मिलते हैं, बहुत सारी मिलती हैं। यानी फेमस क्या? फेमस है देसी कढ़ाई है। देसी कढ़ाई तो देसी घी की। अरे वाह, तो आप खुद भी कुछ बना लेते हैं? नहीं, मुझे नहीं बनाना आता, मुझे सिर्फ खाना आता है। सिर्फ खाना? जी। वैसे किसके साथ घूमना पसंद करते हैं, फैमिली या फिर फ्रेंड्स? फ्रेंड के साथ, क्योंकि फैमिली के साथ बंदा कुछ मजाक नहीं कर सकता, बस सिंपल सा साथ रहना पड़ता है। फ्रेंड के साथ इंजॉय हो जाता है। इंजॉय हो जाता है, खुल घूम फिर के ना मजे मजे की बातें करते। तो फ्रेंड्स के साथ कोई ऐसी मेमोरी जो अभी तक याद हो? अक्सर होता है जब दोस्तों के साथ जाएं तो हमारी शर्त यही लगती है कि जब हम कढ़ाई वगैरह खाएं कि जो सबसे ज़्यादा खाएगा वो
पैसे नहीं देगा और जो कम खाएगा वो पैसे देगा। अभी सबकी कोशिश होती है ज़्यादा खाने। ज़्यादा यही कोशिश होती है कि जो ज़्यादा खाए। यही होता है। अच्छा, ज़्यादातर दोस्तों में खाने वालों में होते हैं खिलाने वाले? नहीं, खाने वालों में। खिलाने वालों में नहीं, खिलाने वालों में से। ऐसा क्यों है? क्योंकि दोस्त हमारे, हम गांव के रहने वाले ना, तो हमारा यही कल्चर होता है कि हम खुद खिलाएं, किसी से खाएं नहीं, क्योंकि हम शहर के रहने वाले नहीं हैं। क्योंकि शहर वाले जो होते हैं वो यही देखते हैं कि अगला दूसरा खवा दे, कभी वही वो खिला दे, कभी वो खिला दे। लेकिन हम गाँव, तो बहाना है। हम गाँव वाले यही सोचते हैं कि हम खिलाएंगे ताकि हमारी रेपुटेशन ज़्यादा हो। हम खिलाने में ज़्यादा अच्छा समझते हैं, खाने में नहीं। तो अपने दोस्तों के साथ कोई कभी किसी बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना बनने वाला सीन हो? नहीं, ऐसा तो नहीं। तो क्या इरादा भी नहीं? शादी में कभी मैं कम जाता हूँ इसलिए। तो किसी की शादी में जाने का ज़्यादा मज़ा आता है जिसमें आप जानते ही ना हो, आपको कोई जानता ना हो? नहीं, मैं शादी में हूँ, मैं बहुत कम जाती हूँ। मैं तो अपने कज़न वगैरह की शादी पे भी नहीं जाता। अच्छा, कोई ऐसी याद जो भी तक याद हो, मतलब कोई ऐसी मेमोरी? नहीं, कोई खास नहीं है। खास नहीं है, उसकी वजह? बस सिंपल सी है। अच्छा, कभी अपने आप से झूठ बोला आप? बहुत दफ़ा। अच्छा, लास्ट टाइम क्या बोला? लास्ट टाइम कुछ चीज़ की ख्वाहिश हो, अगर ना मिले तो कहते हैं रहने दे यार, तेरे बस की बात नहीं है, तो छोड़ देते हैं। ये होता है अपने आप से झूठ बोलना। शुगर है, इधर कोई तो समझ सकता है कि अपने आप से झूठ भी बोला जा सकता है। बिल्कुल। कोई गाना शाना आता है आपको? नहीं, गाना नहीं आता। पोइट्री? अच्छा, गला ही खराब है, कोई बात नहीं। पोइट्री? नहीं, ऐसे नहीं। अच्छा, तो कोई मैसेज है? मैसेज यही है कि मेरे दोस्त, जो भी आप कभी किसी को दोस्त बनाए तो उसके साथ चले, ये नहीं कि आप 4 दिन चलें और बाद में छोड़ दें, ऐसा नहीं करना चाहिए। थैंक यू सो मच। मई की धूप में जब हर तरफ गर्मी का राज होता है, ऐसे में कुदरत का ये जर्द तोहफा अमलतास न सिर्फ साया फराहम करता है बल्कि माहौल में रंगों की बहार भी ले आता है। अमलतास, जिसे सोने की झाड़ी भी कहा जाता है, न सिर्फ एक खूबसूरत दरख्त है बल्कि इसका तिबी इस्तेमाल भी अहमियत रखता है। इसके फल, जिसे मुकामी तौर पर सना कहा जाता है, कई यूनानी नुस्खों में बतौर दवा इस्तेमाल होते हैं। शहरियों का बात करते हुए कहना था कि जर्द रंग के फूल बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। हम रोजाना कॉलेज जाते हैं तो इन्हें देखते हैं तो दिल बाग बाग हो जाता है। हुकूमत को चाहिए कि ऐसे दरख्त ज्यादा से ज्यादा लगाए। ये जर्द रंग के फूल बहुत खूबसूरत हैं और सुबह के टाइम जब हम आते हैं तो कॉलेज में बहुत खूबसूरत लगते हैं और दोपहर के टाइम भी छाँव का इंतज़ाम करते हैं हमारे लिए। और मसला ये है कि बहुत कम है तादाद में, हमें चाहिए और हुकूमत को चाहिए कि इसको और ज़्यादा बढ़ाएं और इनकी तादाद में इजाफा करें और शहर के मुख्तलिफ इलाकों में ऐसे पौधे लगाएं। शहरियों का कहना है कि ये दरख्त सिर्फ जीनत नहीं बल्कि माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ का जरिया भी है। ये गर्दो गुबार को जज़ब करते हैं और ऑक्सीजन फ्राहम करते हैं और शदीद गर्मी के मौसम में ठंडी छाँव बांटते हैं। जब सूरज तप रहा हो और हवा भी थम जाए, ऐसे में अमलतास के जर्द फूल कसूर वालों के दिलों पर ठंडक का फाहा रखते हैं।
अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, मैं बेहतरीन, आप सुनाओ? मैं भी ठीक, अलहमदुलिल्लाह। आपका नाम? अब्दुल मोइस। तो क्या करते हैं आप? मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। बड़े थके हुए हैं। जिम से आ रहा हूँ। अच्छा, तो इधर क्या खाना पसंद है? वैसे इधर क्या खाते हैं? इधर तो खैर कुछ नहीं, आपको पता है जिम बॉयज़ हैं तो वो थोड़ा डिफरेंट टाइप ऑफ फूड पसंद करते हैं। तो वैसे देसी या फास्ट? देसी। देसी में क्या? कढ़ाई टाइप, बिरयानी टाइप। अच्छा, वैसे खुद भी कुछ बना लेते हैं? हाँ, काफ़ी कुछ। क्या क्या बना लेते हैं? जिम फूड लाइक बारबेक्यू विदाउट स्पाइस एंड एग्स वगैरह एटसेट्रा एटसेट्रा। एक्सेट्रा एक्सेट्रा इसमें सब आ जाता है। सब आ जाता है। अरे वाह, तो फैमिली में आपको पसंद किया जाता है, क्या पसंद किया जाता है सबसे ज़्यादा? सॉरी फैमिली में क्या पसंद किया जाता है आपके हाथ का बना हुआ? नहीं, मेरे हाथ का तो कुछ नहीं पसंद किया। कभी खिलाया ही नहीं? नहीं। अच्छा, ये गलती नहीं की। वो दूसरों को अपने लिए, वो दूसरों को पसंद नहीं आता है। अच्छा, वैसे आप किधर से? मैं जौहर टाउन से। जौहर टाउन से, नहीं इधर से? सॉरी, मतलब इधर से ही है? लाहौर से। अरे वाह, जबरदस्त, फिर तो फूड ही होना चाहिए ना। कह सकते हो, लेकिन आपको मेरी फिजिक से आइडिया होगा कि इतना फूडी नहीं होगा। कुछ लोग होते हैं जो फूडी होते हैं जबकि लगते नहीं। नहीं, मैं उनमें से नहीं हूँ। मैं है भी नहीं। ऑनेस्टली बता रहा हूँ कि मैं इतना ज़्यादा फूडी नहीं हूँ। अच्छा, ऐसी कौन सी डिश है जो हम ज़बरदस्ती खिलाया करती थी छोटे होते? अभी भी कुछ है, जैसे कि अरवी। अभी भी वो खिलाती हैं? अरवी मेरी वन ऑफ द मोस्ट अनफेवरेट है। तो अरवी, करेले खैर अब तो कुछ अच्छे लगते हैं। तो क्या मम्मा कैसे खिलाती हैं? जूता पकड़ा होता है एक हाथ में और एक हाथ में जो है सब्जी पकड़ी होती है, या ये खा लो या वो खा लो? नहीं खाना। दो ऑप्शन। खाना है तो खाओ, नहीं तो जिस मर्जी माँ से जाके खा लो। तो कोई कुछ रखिए, कोई फिर किसी और माँ से जाके खा ले। डिपेंड करता है भूख पे। अगर भूख कितनी नहीं है तो बस नहीं खाएंगे, नहीं तो खाना पड़ेगा। तो गाना शाना आता है आपको? नहीं, इस तरह का हम है ही नहीं, बचपन से नहीं है। तो स्कूल टाइम या कॉलेज टाइम, कौन सा टाइम ज़्यादा? यूनिवर्सिटी टाइम। ये दोनों से हट के क्यों पहुंचे? हाँ ना। यूनी में क्या ऐसा था जो कॉलेज स्कूल में नहीं? थोड़े मिच्योर हो गए थे। कह सकते हो स्कूल टाइम भी अच्छा था, लेकिन थोड़े इमेच्योर थे तो वो अपॉर्चुनिटीज अवेल नहीं कर पाए। ठीक है, तो फ्रेंड्स के साथ ऐसी कौन सी मेमोरीज हैं जो अभी तक याद है आपको? स्पोर्ट्स, ओनली स्पोर्ट्स। तो उसमें कौन सा ऐसा फन था जो अभी तक याद है आपको, वो बताएं। फनी मोमेंट। एक बाइक पे 6 लोग जौहर टाउन से एयरपोर्ट खेलने गए थे। एक बाइक पे 6 लोग कैसे आ गए थे? बाइक ही थी ना? हाँ, बाइक ही थी। मेरे जैसे थे ना सारे, तो एडजस्ट हो गए थे। भी पॉसिबल नहीं हो सकता, लेकिन कर दिया। इम्पॉसिबल को पॉसिबल। वो एक के कंधों पे बैठा हुआ था ना। सीरियस। शुक्र है ऐसे करके उठा लिया, वो ऐसे उठाते भी है ना साइड। पॉइंट। हाँ बिल्कुल ऐसे। तो शेर आते हैं आपको? नहीं, मैं शाई टाइप का बंदा नहीं हूँ। तो कोई मैसेज दे दे, मोटिवेशन। कंसिस्टेंट रहो, कंसिस्टेंसी ही सक्सेस है। बिल्कुल ठीक है, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, शुक्रिया अल्लाह पाक का। आपका नाम? आकिब नाम। क्या नाम है? कैस। तो क्या लगता है आप दोनों आपस में? हम दोनों दोस्त हैं। दोस्ती हैं या बेस्ट फ्रेंड? नहीं, दोस्ती है। दोस्ती हैं, हाँ दोस्ती हैं। अच्छा, क्या करने आए आप? हम तो इधर दोनों शो पे काम करते हैं, दोनों एक जगह पे। अच्छा, एक जगह पे काम करते हैं, इसीलिए दोस्त? जी, इसलिए दोस्त। कैसे जा रहा है आपका काम? अच्छा जा रहा है, दोस्ती भी निभा रहे हैं, काम भी कर रहे हैं। तो क्या काम करते हैं आप? आइसक्रीम का। तो अभी कैसे जा रहा है आपका काम? मौसम थोड़ा सही, सर्दियों में जा रहा है तो कैसे? शुक्र अल्लाह का, माशाल्लाह ज़बरदस्त। अभी भी ज़बरदस्त? हाँ जी। अरे वाह, तो कब से करें आप? जी 6 साल हो गए मुझे। 6 साल? आपको भी 6 साल? जी 6 साल ही हुए। अच्छा, यानी फिर तो आप बेस्ट फ्रेंड्स हुए ना। 6 साल तक दोस्ती, इतनी कोई दोस्त वाली तो नहीं रहती। अच्छा, वैसे किधर से आप? मैं पेशावर से। पेशावर की कौन सी ऐसी डिश है जो आपको लगता है आदमी ट्राई करनी चाहिए? पेशावर को तो हमें चपली कबाब सबसे ज़्यादा अच्छे लगते हैं। पेशावर के चपली कबाब भी सुनने को मिलते हैं जहाँ भी जाओ। बस उसका एक नाम है ना, ब्रांड है, फेमस डिश है। आप बताएं, आप किधर से? मैं छांगा मांगा से। छांगा मांगा यानी इधर से ही? जी, यहीं से। अरे वाह, तो छांगा मांगा वाली साइड की कौन सी डिश अच्छी है? वहाँ की कोई डिश अच्छी नहीं है। वहाँ का जो मिल जाए बस, खुदा अल्लाह का शुक्र है, इसलिए वो गाँव छोड़ के शहर में आए हैं। जबरदस्त हो गया। अच्छा, इस मार्केट का क्या अच्छा लगता है? फास्ट फूड ही? मार्केट इतनी ख़ास नहीं है इसकी, क्योंकि जितना इसका नाम है ना मार्केट, उतना नहीं है।
उसका नाम बड़ा चलता है मार्केट का, क्योंकि मार्केट ये है वो है, लेकिन इसका टेस्ट ना इतना ख़ास नहीं है। कुछ टेस्ट इतना खास इसमें कुछ ऐसे ब्रांड है जिसका टेस्ट है, एक जाकिर टिक्का है उसका टेस्ट अच्छा है, मास्टर बिरयानी है, एक दो ऐसे है जिसका टेस्ट है, बाकी जो है लोकल है, सारे लोकल है। वैसे देसी या फास्ट फूड? फास्ट फूड की बात करें, फास्ट फूड वाले हैं। फास्ट फूड में क्या ज़्यादा पसंद करते हैं? फास्ट फूड में मैं कह रहा फास्ट फूड में कुछ पसंद नहीं है, देसी चाहिए। अच्छा, आप देसी पसंद करते हैं? जी। हाँ, तो देसी में क्या पसंद? हम खुद देसी बंदे हैं तो देसी का क्या पसंद करते हैं? देसी में सबसे ज़्यादा तो मैं भिंडी पसंद करता हूँ। फैमिली में आप क्या ज़्यादा पसंद करते हैं? फैमिली में हमारा सबसे ज़्यादा जो मैं खाता हूँ, सारे फैमिली वही भिंडी खाते हैं। अरे वाह, ज़बरदस्त हो गया। तो अगर कभी आपने अपने आप से झूठ बोला है? जी झूठ तो बड़ा बोला है, बड़ा झूठ बोला। लास्ट टाइम में क्या झूठ बोला था आपने अपने आप से? लास्ट टाइम अभी ये आज की बात है, मैं गया था शॉपिंग करने, जो है बॉस ने कॉल किया, कह रहे किधर है? मैंने कहा यार मेरा तबीयत बड़ा ख़राब है। कह रहा है यार अजीब बात है, आप टाइम पे नहीं आते। मैंने कहा यार मैं तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है और मैं इस वक्त शॉपिंग करने गया हूँ। हाँ जी, मैं शॉपिंग करने गया। बाद में उनको पता चला, कह रहा है यार ये कपड़े कितने हैं? मैंने कहा यार कोई दोस्त ले गया। कह रहा दोस्त नहीं, मैं तेरा पीछे किया था, तू उधर गया था। अच्छा, पोइट्री आती है आपको कोई? जी आती है। चलिए सुनाए। कौन सा पोइट्री सुना? जौन सी आपको लग रहा हो सुनानी चाहिए सिचुएशन के हिसाब से। अच्छा, वो उसका एक गज़ल है हाफी का, कि गज़ल नहीं, खैर उसका लास्ट फिक्र है, कह रहे हैं कि एक मिनट स्टॉप, कह रहा है कि मैं भूल गया। क्या कह रहे हैं? वो कहते हैं तेरे बिछड़ने पे लिख रहा हूँ ताज़ा गज़लें, ये तेरा गम है जो मुझको मशहूर कर रहा है। उसका अरे वाह, अरे वाह, अरे वाह, ज़बरदस्त। एक तेरा गम है जो मुझे मशहूर कर रहा है। वाह, ज़बरदस्त, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक, वालेकुम सलाम। आपका नाम? उस्मान। क्या करते हैं आप? मैं काम करता हूँ जाकर कब। तो कैसे जा रहा है आपका काम? अच्छा जा रहा है माशाल्लाह। अच्छा, वैसे आपको खुद क्या पसंद है, देसी या फिर फास्ट फूड? देसी। देसी में क्या? देसी में होती है कढ़ाई बाग। हाँ हाँ, ये तो मुझे पता है, लेकिन आपको क्या पसंद है? मुझे हाशिया पसंद है। अच्छा, देसी में सब पसंद। हाँ जी। आप हैं किधर से? मैं ज़िला रहीमर खान से। अच्छा, उधर की कौन सी ऐसी डिश है फेमस जो आपको लगता है लाजमी ट्राई करनी चाहिए सबको? उधर की डिश का मुझे तो नहीं पता। कभी खाई नहीं है क्या? खाई है। कौन सी फेमस है आपको लगता है जो? लेकिन हाली फिलहाल इधर है, उधर हम जाएंगे तो खाएंगे ना। तो जाएंगे तो खाएंगे, तो खा के नहीं आए? नहीं। अरे वाह, कितने साल हो गए आपको इधर काम करते? मुझे हो गए 9 महीने हो गए। 9 महीने यानी अभी स्टार्ट? हाँ जी। नया नया काम है। तो इधर का सबसे अच्छा क्या है? इधर से सबसे अच्छा बारबेक्यू है, कढ़ाई है, सब्जी है, तवा पीस है, जो का तवा सब इधर अच्छा है। तवा पीस है, उसमें टका है, ब्रेड मसाला है, कबाब मसाला है, जो खाए उसमें अच्छा है। अच्छा, वैसे आप खुद भी कुछ बना लेते हैं? नहीं, हम वेट नहीं करते हैं बाहर, हम खुद नहीं। वैसे ही पूछ रही हूँ, खुद भी कुछ बनाना आता है? नहीं, हमें नहीं आता। यार, तो कुछ अगर बनाना पड़ जाए तो क्या करेंगे आप? कुछ बनाना हमें आता ही नहीं, हम वेट नहीं करते हैं, इसलिए हम सीखेंगे, फिर सीख के फिर हम बताएंगे। और क्या लगता है अगर सीख लोगे तो बना सकोगे? हाँ जी, सीख के फिर बनाएंगे ना हम। किसी और से झूठ बोला है कभी? नहीं। हाँ, बोला है, ये तो जिंदगी का सूरज, झूठ के बगैर तो जिंदगी चलती नहीं, सब बोलते हैं। हमने कभी बोला ही नहीं? झूठ के बगैर नहीं, सच से जिंदगी चलती है। अरे यार, ऐसा कैसे हो सकता है कि आपने झूठ ही नहीं बोला? नहीं, कभी नहीं बोला। सही है। अब यही झूठ है सबसे। अच्छा, ये झूठ है? फिर लगता है किसी को झूठ है। ये है झूठ। गाना शाना आता है आपको? नहीं। अच्छा, फेवरेट मूवी कौन सी है आपकी? मूवी या फिर ड्रामा, कौन सा फेवरेट? वो वैसे देखते नहीं है, एक ड्रामा है सिर्फ मैं देखता हूँ बस। वो उसका मुझे नाम नहीं आ रहा, क्या नाम है उसका? यानी जो भी था भूल गया। हाँ। है ना, भूल गया। हाँ। अच्छा, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ कि आलू के दरख्त के नीचे 3 लड़के खड़े हैं, अगर आलू गिरेगा तो किसके सर में गिरेगा? नहीं, अगर किसी के सर में गिरेगा तो उससे सर फटेगा या नहीं? नहीं, सर फटेगा और गिरेगा तो सर फटेगा। गिरेगा तो सर फट जाएगा। आलू का दरख्त ही नहीं होता। अच्छा, आलू का दरख्त? हाँ, आलू का दरख्त ही नहीं होता। जबरदस्त हो गया। मैंने कब कहा दरख्त होता है? आलू तो आपने तो कहा गिरेगा तो सर फटेगा। हाँ, तो गिरेगा तो सर। दरख्त की बात की है ना आपने,
जो दरख्त में आलू तो नहीं होते, आलू जमीन से निकलते हैं। तो मैंने तो पूछा ना क्या। हाँ दरख्त होता है, किसी के सर में गिरेगा तो सर फटेगा ही नहीं, आपने कहा फटेगा नहीं, सही है वही लगे रहो। समझा ना। दूसरा चलो खैर, दूसरा भी दरख्त होता है, चलो कोई बात नहीं। बाय द वे थैंक यू सो मच। जी तो नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा कि आज हम मौजूद थे बरकत मार्केट, जहाँ हमने लोगों से की मज़े की बातें और देखा किस तरह से वो अपनी फैमिली के साथ खाने पीने को एंजॉय करते हुए नजर आ रहे थे। इसी के साथ अपनी और फजिया खाई को दीजिए इजाज़त, रखिए अपना बहुत सारा ख्याल, मिलते हैं एक नए दिन के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। Hi, I'm Uma Malhotra and I welcome you to my show, Glow and Beyond with Uma Malhotra. Why should I get that facial? Why should I go for a Repicharge facial then an O3 facial? We do the research for you. So we make sure we give you the best. For example, you got fat lash. A client was allergic to fat lash, so I did a London lash patch test on her. She was absolutely fine with London lash. So I used the London lash. Hello and welcome to Business ABC. But the number one reason why businesses fail, whether they are starting or scaling or growing, is because of money. And when you go to them with an idea, they will always go, "Oh, great idea. Oh, vadya." The best businesses either fix something or they make them better. Where it's legal or where it's contract, take your time. My name is Terence South. I formerly served in the British Army. We had to go down as the muscle squad and go on, you come with us. She not let us go, we're fighting. Oh. I could communicate, I had all the skills for the wirelesses, the radios. I could do that, that was no problem. I could do that blindfolded. Second World War, understood where you were and what you were doing, where your head was.
Hello, I'm Robin Ashby. I'm a city councillor, I'm an advisor. I have done a lot of things in my life. I've been around the world, I've met many, many people. And I want to share with you in this series exclusively for South Asian Global Television my thoughts on a range of topics about how we make this a better world that we can all live in. And it's your world, it's your future, not mine. I've, at the end of my career, so many people watching this will be at the beginning of their career. So how can I pass on some advice to you, give you some ideas, trigger some thoughts in your mind about how we can have a better world that we can all live peacefully in and in harmony, and we can create a better world for our future, not just for you, but for my children, my grandchildren, and the great-grandchildren still to come. So this first programme of this series is about immigrants and immigration. Immigration is something that causes a great furore in our media. The numbers are the headlines, and nobody really understands what they mean. So that's the first thing that I want to address. But before I do that, what I just want to quote to you is something that was said by the late Shane MacGowan of the Pogues. They had the iconic Christmas anthem, The Fairy Tale of New York. And he said, I'll quote here, I've taken out the swear words, "People are talking about immigration, emigration, and the rest of the thing. It's all nonsense. We're all human beings." So that's what I want up front and centre in this talk, which is we are all human beings. We're all in this world together. It's the only world we've got. We're living the only life we've got. How can we make that better? So let's start off with Brexit. Brexit was the vote for Britain to leave the European Union, and it's been blamed on people's reaction to immigration. But is this a root cause? I don't really think so. I think it's very much a matter for debate. We can certainly say that it was a contributor to the greatest act of self-harm this country has ever carried through. And it has divided us. We've divided us almost down the centre. We stopped talking to each other. We stopped listening to other people's point of view. We get repeatedly stories about the new selfishness that's come forward as a consequence of Brexit and COVID. It's changed the way that we react between ourselves, and that is, in my view, is a bad thing. We need migrants in this country because we are becoming ever poorer. Is it a real issue, or is it a fear of immigration that split the Conservative vote and drove a lazy Prime Minister to charge forward with an ill-prepared referendum and then to be replaced by somebody whose explanation of what it meant was, for so long, Brexit means Brexit. Now that's just entirely meaningless. But what it did was to start to drive people away from this country, to drive away skills that we've been depending on for so long, and to create enmity where it did not exist before. So she was succeeded by another Prime Minister who was a showman, not a statesman, who contributed to our instability and division when we needed calm and unity. So the facts are that the net migration into this country was 672,000 for the year ending June 2023, and those are figures that are the best estimates from the Office of National Statistics, the national figures. But this is our first talking point. This is a preliminary estimate. The numbers can and will change, they always do. But the media get hysterical over the first numbers, and they never really report when they're changed, and that we actually get a more realistic figure over time. So there's these figures called the net migration. Now this net migration is a key. This little word net is a key. That's the difference between the numbers of people entering the country, maybe on a permanent basis, and those who are leaving. And that just as there are more people being born rather than dying, that's a net increase, and it contributes to a growth in the population, and that's a whole other area. So for the moment, any country needs
a population that's increasing overall to do the work, to earn the wealth, to pay for the babies being born and raised, for the older people to give up work, and for the ones in the middle who can't work for whatever reason. That is what we call the society we live in. So there are, within these 672,000 net, there are a range of categories of people. So I've just got them listed here, and I'll read them for you. The first one is asylum seekers. Then there's people coming to work here. Then there's people coming to train and study here. And family members being reunited. There are agreed humanitarian admissions that they're called, what we would call refugees, and a few other minor categories. Are these all bad? Well, let's talk about the ones that come here as students, like so many here in Newcastle. Hello, I'm Alan Curry. I'm bringing you a show badge of honour on my successful life in the police service to the rank of Chief Superintendent. Talking about me, and hopefully I'm saying some nice things about myself. There's a couple of bad ones, I'm sure, as well. And I don't like criminal activity. As opposed to the other way around, when you arrest somebody and have to find the evidence. And the feeling of doing something for somebody else, I don't know how you can get that from anybody else. Hello, Dr. Anand here to tell you about unleashing your inner power. When you talk on Facebook with someone with your family far away, genuine communication takes place. Just look after yourself and grow in power and grow in finance and grow in status. If you stay in your comfort zone, you'll never find out who you are. सूरज के बदलते हुए तेवर के साथ मुल्क भर की तरह हवेली लखा और गिरदो नवा में भी गर्मी की शिद्दत में बेपनाह इजाफा हो गया। गर्मी की शिद्दत की वजह से शहरियों ने हवेली लखा रोड अड्डा हेड सुलेमान की, जिसे मुल्तान दिल्ली रोड भी कहा जाता है, सड़क किनारे लगे घने दरख्तों की छाँव के नीचे कायम मशरूबात पॉइंट का रुख कर लिया, जहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म की मशरूबात के पॉइंट कायम हैं। यहाँ पर गन्ने का रस, सिकंजबी, सरदियाई, सत्तू और इमली के शरबत समेत मुतद्दद मशरूबात के ठेले लगे हुए हैं। गर्मी की शिद्दत को कम करने के लिए यहाँ मशरूब पीने लोग जौक दर जौक आते हैं और ठंडे मशरूबात पीकर राहत महसूस करते हैं। हेड सुलेमान की इलाका की सरदियाई बहुत मशहूर है, जिसमें बादाम, खशखाश, सौंफ, ज़ीरा, छोटी इलायची, चार मगज़ और दीगर अशिया मिलाकर तैयार की जाती है, जो पीने वालों के लिए खुश ज़ैक़ा होने के साथ गर्मी की शिद्दत कम करके दिल को सुकून, ठंडक और राहत बख्शती है। रिपोर्ट शाद सईद वट्टू, नुमाइंदा साउथ एशिया, ग्लोबल टीवी, हेड सुलेमान की हवेली लखा।
Robin Ashby. I'm a city councillor. I'm an advisor. I have done a lot of things in my life. Mix some hot Chileans, cool Jamaicans, Dominicans, Trinidadians and Bajans with some Ethiopians, Chinese, Vietnamese and Sudanese. There were 282,000 people who came here to study. We can absolutely understand that first generation come here and they're in a strange land where they have to learn new customs and it's cold as well. Take a look at students. What do we get from students? Large numbers of them. They pay fees to our universities and colleges much more than domestic students do. They keep our universities going. Spend in our shops. They learn or improve their English, helping to secure it as the global language